Sachin sir, you can start. Okay. Good afternoon, everyone. इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड वेबिनार में मैं सचिन ब्राह्मणकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वेबिनार दैट इज 43rd वेबिनार, इट्स अ लॉन्ग सीरीज ऑफ द वेबिनार सिंस लास्ट ईयर इट्स गोइंग ऑन। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर प्रेसिडेंट मिस्टर वाईपी सिंह साहब, आवर सेक्रेटरी मुकुल त्यागी साहब एंड द होल टीम ऑफ आईएनए। उसके साथ साथ हमारा जो श्रेय जाता है जो हमारे कोऑर्डिनेटर दीपक जी चटर्जी साहब, जो ये वेबिनार हमारे लेके आते हैं मनजीत सिंह विशाल जी, अलंकिता पांडे जी, उन सभी का मैं इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसी के साथ जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत, और जो हमको नॉलेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नई नई चीजें सिखा रहे हैं। तो आज के वेबिनार में हमारे साथ जो जुड़े हुए दैट इज मिस्टर महेश दामदोहरे, न्यूट्रीस्टार इंटरनेशनल पुणे से, डॉक्टर अवनेश कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर दयाल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर रंजना तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर Ranjana Seeds and Agrochemicals, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तवा, प्रोफेसर एंड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर भोपाल से। चारों स्पीकर्स का भी मैं इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूं। और जब से बॉडी फॉर्म हुआ इंडियन नर्सरी एसोसिएशन का और वाईपी सिंह साहब ने चार्ज लिया है एज ए प्रेसिडेंट, उनके अंदर मार्गदर्शन के अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटीज एसोसिएशन की ओर से नर्सरी मैन के लिए हो रही है। उसका इन ब्रीफ थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन, जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में जानकारी के लिए मैं हमारे मनजीत सिंह जी विशाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन ब्रीफ आप इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के बारे में बताएं। I request Mr. Manjit Singh Vishal to give a brief introduction of Indian Nursery and its activity. Over to you, Manjit ji. Yeah. Thank you, Sachin sir. I, on behalf of Indian Nurserymen Association, welcome all the participants and the speakers on board today. And a special thank to our sponsor, NutriStar today, who is supporting the webinar, the 43rd webinar that we are scheduled today. So I'll be talking about the details about Indian Nurserymen Association, what all things we have been doing since last 1.5 years almost, and the history of Indian Nurserymen Association. Sachin sir, can you see the screen? Yeah. Just do the full screen. Is it okay now? Yeah, it's fine now. Okay, thank you. So Indian Nurserymen Association, as we all know that Indian Nurserymen Association was founded in the year 1987, and since then we call it as the Green Journey. Before talking about the details about the Indian Nurserymen Association, I'd like to talk about the founding president of Indian Nurserymen Association, Shri Arjun Das Agarwal sir. Arjun Das Agarwal sir founded Indian Nurserymen Association in the year 1987 from a very small place called Kathal, which is in Haryana, and from there the journey of Indian Nurserymen Association started. We talk about the leadership board. The first president, late Shri Arjun Das Agarwal, who served as the president from 1987 to 1995. And now we have the 9th president, Shri YP Singh Ji, on board. YP Singh Ji basically belongs from Delhi, and he owns the North India's largest nursery called Greenways Nursery in Delhi. Before serving as the president since 8th of September 2019, he also served as the treasurer from 2006 to 2008, and further the general secretary from 2008 to 11. And he has been instrumental in taking Indian Nurserymen Association altogether to a very different height. We'll be talking about the details about the activities that Indian Nurserymen Association is taking care in these last few months. Apart from the regular leadership board of Indian Nurserymen Association, we are blessed to have the support from many personalities from different fields, whether it is Dilip Mehndi Sahab, Siyaji Sindhe Ji, Padam Shri Awardee Dr. Sunita Narayan, Diamond, or BM Singh Ji. Not many people also join on as the member with us, where we count, we have more than 10 member of parliaments and member of legislative assemblies. We have people from the Bollywood industry. We have people from different academical and the research background also on board with the association as of now.
The sapling which was planted in the year Uh-huh. 1987 is now I'm taking just shape. you're And also in that. Yeah. So join it. I'll just request all the participants to kindly keep their microphone on the mute mode so that there is no interference while talking the details. So the sapling which was planted in the year 1987 is now taking a shape. Now we are an extended family of more than 2 lakh people connected in the network of Indian Nurserymen Association and approximately 4,000 lifetime members of Indian Nurserymen Association. So the INA basically represent the network of strength, support, and success, where we have these stakeholders from the landscape and the forest industries, whether they're plant breeders, greenhouse manufacturers, nursery growers, retailers, distributors, or the landscapers, florists, and from the academical background, whether they are from the students, educators, researchers, manufacturers, and so on. Uh, Basically, Indian Nurserymen Association work on the 5 binding policies. First, being the influential advocates, being the national body of all the nurseries across India, is the first and the foremost responsibility of INA to be the influential advocates, whether it is required at the state level or the central level. Then we are the authoritative educators, wheresoever it is required through the capacity building programs, study tours. So we keep on doing these kind of activities. Third binding principle of Indian Nurserymen Association is to be the collaborative across all the industries. Bringing all these stakeholders under one banner of Indian Nurserymen Association is something what we strive for. We are also the fervent supporter of the plant business as well as whatever things we do, we basically contribute at the end as the passionate promoter of healthy and green community. I'll just be going to the thematic areas. So INA basically work on 6 thematic pillars: PR and advocacy, networking and partnership, capacity building and study tour, publication and papers, events and exhibition, research and development. If we talk about the PR and the advocacy part, we all witnessed what Indian Nurserymen Association under the leadership of Sri YBG did for the relief during the COVID-19 pandemic time when the certain lockdown was imposed. That time he did the advocacy at the national level and he managed to get the plants under the essential items category. And he keeps on doing a lot of things for the advocacy at the national or the state level, whether it is to raise the voice against the proposed Nursery Act or do the advocacy with National Horticulture Board in reviving the Confederation of Indian Horticulture, or it's to promote the Flower and the Export Council of India, which will be an independent body out of the APEDA structure. Another thing, networking and the partnership, INA is now going global apart from the Indian presence. Now INA is having presence in Japan, Vietnam, Lebanon, South Africa, Netherlands, Italy, Bangladesh, recently from Australia, as well as the Ireland thing was done. The membership of Indian Nurserymen Association is very much open. Anybody who is interested in getting the membership of Indian Nurserymen Association, they can call us or write us through email or WhatsApp us on our official number, or they can also download it from our website, indiannurserymen.com/membership. I think I'm audible, Sachin sir. Yeah, you are properly audible. Please go ahead. Under the publication and papers category, INA publishes its monthly magazine Nursery Today, which is a very elite class international standard magazine, which publishes every month from the head office of INA. And I'm sure that all the members of Indian Nurserymen Association are getting the copy of the magazine. If anybody is not getting, they can feel free to write us, call us, or download it from our website, indiannurserymen.com/magazine. If anybody wants to have the article published or anything this found relevant, that need to be published through the banner of Indian Nurserymen Association, please feel free to write us or share all the details over our email. Apart from the magazine, INA also published the national directory for all the stakeholders across this industry, which was published in the year 2017-18 by the Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu Sahab. The third edition of the directory is due, which will be announced very soon. Under the capacity building and study tour, INA continuously is striving to do something good at the ground. Pre-COVID, we were into seminars, conferences, workshops. Post-COVID, we got into this webinar series, and now we are very much pleased to say we are into the 42nd or the 43rd webinar that is happening today. And we also promote our members to go for the international tours so that we can have the knowledge exchange programs over there. Last time in the IPMSN happened in Germany, or whether it is the Canton Fair in China or the Thailand, we keep on promoting the people to go ahead with these kind of things. Under the R&D, INA is into the process of designing Seed for Future iLab for Horticulture Innovation and Learning, which is a very innovative project. The details about the iLab will be shared on the public platform very soon. Events and exhibition, INA was instrumental in providing the largest event called
Hortipro, which happened in Pune last year. And now, due to the pandemic, it was not possible to conduct in 2020, but the third edition of the Hortipro will be announced very soon. Apart from the regular activities, INA is also very much pioneer in taking lead in getting into any kind of social responsibility activity whenever it is required. During the COVID pandemic time, the President Indian Nurserymen Association, Shiv IPG, appealed with all the members to raise funds for the Prime Minister Relief Care Fund. And it was surprisingly found that within a short span of less than 2 months, approximately a sum of 51 lakh rupees was raised and contributed to the Prime Minister Relief Fund. And then also during the Kerala relief, we witnessed what all things Indian nurserymen did by raising a sum of rupees 25 lakh rupees and contributed it to the Chief Minister's Relief Fund. So this is all what is from our side. I'll just be sharing the details about the contact details about the Indian Nurserymen Association at the later slide, so that if anybody want to write us, call us, they can feel free to do so. For writing us, you can email us at office@indiannurserymen.com, or you can call us at 888 888 and you can also WhatsApp at the very same number 888 Thank you. Over to Sachin sir. Thank you very much, Manjit ji. So today we have a webinar on vegetable seeds and nursery propagation. So for this, all credit goes to our sponsor, NutriStar International, our outreach partner, Nursery Lab. So today we have with us Mr. Dr. Avanesh Kumar. He is a Deputy General Manager, Dayal Seeds Private Limited. Dr. Avanesh Kumar ji has a wide experience of seed business since last 17 years. He did his PhD in agriculture. He has a fantastic experience in field and crop management in vegetable crops. So today we have with a very expertise person and knowledgeable expert with us to give us knowledge. So before starting, and I requesting him, I request all the participants to keep their microphone on mute so there will be no interference during his speech. So now I welcome Mr. Dr. Avnesh Kumar and I request him to deliver his lecture on today's topic. So over to you, Dr. Avnesh Kumar, sir. Okay, thank you, Mr. Sachin. Thank you very much. Hello and welcome to all participants. Thanks to Nurseryman Association, especially to Mr. Chatterjee, to provide me the platform to share my views on seed business and role of seed in vegetable crop production. Uh, when we talk about seed, as we know that seed is the first and foremost important commodity for successful of any vegetable cultivation. Seed is a key component among all agri inputs for sustainable crop production. It is estimated that quality seed accounts for 20 to 25% of the productivity. So, on the basis of the productivity increase by using good quality seed, 20 to 25%, it's a good quantum. We can say that अच्छा बीज ही खेती की आधारशिला है. तो फर्स्ट स्टोन हम लोग इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टोन है सीड. अच्छा सीड यूज करें. The second thing, when we talk about vegetable seed market, we are seeing that some positive changes in the vegetable market in last 10 years. As we know that our life pattern has been changing day by day. Now peoples are more conscious about their food quality, nutrition values, and due to their diet pattern, now vegetable use of vegetable in their diet increasing day by day, and human being need to use approx 325 grams vegetables daily in his diet. So this is the second
nutritive diet portion after cereals. When we talk about the shift of vegetables from grains from last 10 years, it is a huge amount shift from cereals to vegetable seeds, vegetables crops productions. No? A lot of area is changing day by day into the vegetables crop because of farmer gets more benefits from vegetables crop rather than cereal crops. So farmers now changing their cropping pattern and try to use some part of land to grow vegetables. When we talk about seed market, India is the second largest producer of vegetables next in the world, next to China. The production of vegetables has increased from 101 million tons to 184 million tons in last 10 years. When we talk about major seed producing states, UP is the topmost state. Second one is West Bengal. Third MP. This is the market size based. Maharashtra, then Gujarat, then Bihar, then Odisha, Karnataka, Haryana, and Chhattisgarh. So these are the major states where vegetables is growing. I think these 8 states cover 80% of the vegetable production. When we talk about crop-wise area, so potato is the major crop which covered major area, and second onion is covered approx 1200,000 acre. Then tomato, then chili, then brinjal, cabbage, cauliflower, bottle gourd, sponge gourd, bitter gourd, cucumber, okra, radish, pea, carrot, and beans. These are the major crops growing area in India, majorly. When we talk about seed market, Indian seed industry is the fifth largest seed market in the world. It accounting 4.4% of the global market. Size-wise, it looks very small, but is the India is the fifth largest seed market in the world after US, China, France, and Brazil. Indian seed market has been growing at 12% rate, where the growth rate of global seed market is only 5%. So then we can say India is growing faster than other world. So this is a good sign for India. And when we talk about the vegetable seed market, it is also growing 10 to 50% per annum from last 10 years. There has been an increase of 194% in Indian vegetable hybrid seeds market during last 10 years. We can say that OPV market are converting into the hybrid seeds very fast. So this is also a good sign for India that OPVs are reducing and hybrids are growing well and faster, and farmer get more benefit due to hybrid seeds. At present, Indian vegetable seed. Hello. At present, Indian vegetable. Sir, my voice is getting back too much. I request all the participants to keep their microphone. I request all the participants to keep their microphone on mute. Sir, you have shared your screen? Dr. Avanesh ji. Dr. Avanesh sir, you are on mute. Please unmute yourself. Dr. Avanesh sir, you are on mute. Please unmute yourself. You are on mute. Okay. And sir, you have shared your screen? No. Oh, it's okay. Okay, fine. Please go ahead, sir. Now I'm audible? Yeah, you are properly audible, sir. Okay. Now we need to think the role of seed in crop production, because seed is play a vital role in crop production.
Uh, it is cheapest input in crop production, but the key of agriculture produce. We can say that seed is the key to produce any crop. Uh, Crop status largely depend on the seed material used for sowing. Response of other inputs in crop production also depend on seed material used. If we not use good seed and we use more fertilizers and we do good agronomical practices, we cannot take good harvest. By the using of good seed, and then after all agronomical practices and nutritions and other things we use, then we can get optimum yield from the any variety. So seed is the major important factor in agri inputs. The seed required raising crops is quite small and cost-wise also cheaper than other inputs. When we talk about fertilizer, pesticide, seed is the cheapest source of agri inputs. So we need to use good seeds so that we can utilize the we can use utilize the nutrient efficiency, land utilization. All these things can depend will may depend on the seeds used by us. As I mentioned, that good seed can contribute about 20 to 25% increase in the yield. We can say that good seed is the key high yield. Uh, when we get high return, पर benefits की अगर मैं बात करूं, what is the benefits of good quality seeds? So we get high returns per unit area as per genetic potential of crop can be fully exploited. Due to fast and uniform emergence of seedling, we can minimize seed rate. So by using good seeds, our seed rates will be can be minimized so that we can sow major area or big area in small quantities. That is the another benefits. We get vigorous crop free from pest and disease. This is the another benefits. Good seed perform well in extreme climate condition. When now you are seeing that lot of climatic changes are there. Good seeds are have the capabilities to perform in any situation, extreme hot, extreme cold. So these are the quality of seeds, so that the seeds can perform well in extreme climate conditions also. The quality seed respond well to the applied fertilizer and nutrients. So when we use good quality seed, the use of nutrients also respond well. We get uniform plant population if and same time maturity if we use good seeds. Crop raised with good quality and aesthetically looks pleasing. The produce value is also high. The market due to good shape and size, we can get the price better due to shape and size in the market. Now question arrives that how we can select good seeds. Seed selection is very important step in cultivation. Quality of seed should always be good so that we may get better production. Seed selection depend upon some factors like seed should have higher genetic purity, seed should have higher physical purity, seed should have good shape and size, color according to specification of the varieties, high physical soundness and weight also. Sir, sorry to interrupt you, sir. You can just mix. Can you mix Hindi and English? So there is request for Hindi also and English also. If it is better, you can mix it properly. Okay. Actually हम लोग मैं अभी बात कर रहा था कि अच्छा जो सीड है वो उसके उसको कैसे उसका क्या रोल होता है उसके विषय में मैं अभी बात कर रहा था.
तो सीड फिजिकली प्योर होना चाहिए, जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, जर्मिनेशन बहुत बेटर होना चाहिए, इवन 90% से अबव जर्मिनेशन होगा तो सीड की क्वालिटी को अच्छा मानते हैं. दीज आर द सम पैरामीटर्स. डिजीज से फ्री होना चाहिए. दीज आर सम पैरामीटर्स फॉर सीड क्वालिटी. अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग अच्छा सीड सेलेक्ट कैसे करें. तो वी शुड have higher germination, higher vigor and stamina also. Many times कभी कभी ऐसा होता है कि विक्रेता के पास गए, उसके पास एक वर्ष पुराना सीड रखा हुआ है, तो उसमें स्टेमिना नहीं होता, उसको जर्मिनेशन तो होगा लेकिन फास्ट जर्मिनेशन नहीं होगा, पौधा बहुत स्लो स्पीड से ग्रो करेगा. तो इस कंडीशन में अच्छा सीड वही माना जाता है जो बहुत स्टेमिना उसके अंदर अच्छा हो और तेजी से वो ग्रो करने की कैपेबिलिटीज रखता हो. सीड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इन्फेस्टेशन. किसी भी तरह का कोई डिजीज का इन्फेस्टेशन, मेनली फंगल डिजीज जो होती है उनके प्रति कोई इन्फेस्टेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए. सीड शुड बी फ्री फ्रॉम वीड्स का सीड भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, या अदर सीड्स जैसे लौकी है तो उसमें कद्दू का सीड नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए. सीड शुड बी मेन फैक्टर और मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किसानों के लिए है, मेरा कहना है कि सीड शुड बी परचेज फ्रॉम गुड रेपुटेटेड शॉप एंड चूज रेपुटेटेड कंपनी. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि जब भी किसान सीड परचेज करने के लिए जाता है तो वो विक्रेता के ऊपर डिपेंड होता है कि मेरे को लौकी का बीज चाहिए, जो भी अच्छा हो वो आप दे दीजिए. तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि किसान को या नर्सरी मैन जो भी नर्सरी यूज करते हैं, जो वैरायटी उन्होंने यूज कर रखी है, देख रखी है, उन्हीं वैरायटीज को जाके परचेज करें. अगर हमें पहली बार में कोई विक्रेता बताता है कि कोई नई वैरायटी बहुत अच्छी आई है, तो उसको हमें फर्स्ट टाइम में बड़े पैमाने पे एक्सप्लोर नहीं करना, बड़े पैमाने पर नहीं लगाना है. उसको छोटी क्वांटम में, छोटे से एरिया में लगा के टेस्ट करें पहले. अगर वो परफॉर्मेंस वैरायटी का अच्छा आता है, देन ही हम उसको आगे बड़े एरिया के अंदर लेके जाएं. So these are some things I would like to share all of you. These are points. I think I have covered all points. We can discuss more in Q&A session. Thank you. I would like to over Sachin ji. Sachin ji, my voice is. I would like to hand over to you. Thank you very much, sir, for the sweet and nice presentation and a very informative session you have given. Thank you very much, sir. Now we have with us Mr. Mahesh Damdore from Nutristar International. This company has been serving the needs of horticulturists, for nurserymen, even also in the field of landscape since 2007. They are basically the slow release fertilizing products, biostimulants and nutrients to the industry. These are the distributor of reputed brands from Germany, Spain and Japan. So now we have with us a very informative session. We have with us Mr. Mahesh Damdore. So I welcome him on behalf of Indian Nurserymen Association, and I request him to deliver his lecture on today's topics. And I also request him to mix up both the Hindi as well as in English, so all the participants will be able to get the things. So I request Mr. Damdore sir to present their presentation. So over to you, sir. Thank you, Sachin sir. Before I begin, I would like to thank the Indian Nurserymen Association. They have been doing phenomenal job. I've been seeing that for the last year and a half or so. And this series of gaining knowledge, giving knowledge is a really good initiative. And I was very impressed to learn that this is the 43rd issue of this particular series. And I wish this would continue in the future. First and foremost, actually, about myself, I am a member of the Indian Nurserymen Association, a life member. And as Sachin sir mentioned, we are into modern nutrients and fertilizers. आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम एक्चुअली मैं ये कवर करने वाला हूँ कि मॉडर्न नर्सरीमैन
जो सॉइल लेस मीडिया में काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट के लिए काम करना चाहते हैं, और या लैंडस्केपर्स, उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस आज मार्केट में हम लेके आए हैं जो आपको अवेलेबल है। एक्चुअली आज अवेलेबल नहीं है, पिछले 14 सालों से हम दे रहे हैं। एंड ये जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। एक्चुअली मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, थोड़ा ही करूंगा, लेकिन उसके फायदे क्या है और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी मेरी हैरानी की बात ये थी कि वी डील विद जर्मन कंपनीज, स्पेनिश कंपनीज, कंपनीज फ्रॉम जापान, एंड वी इंपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स इन देयर एंड सेल देम इन देयर ओन ब्रांड्स। तो व्हेन आई टॉक यूज्ड टू विजिट नर्सरीज इन इंडिया, वहां पे जाके देखने के बाद लोग मिट्टी में उगा रहे हैं, कुछ बेड्स पे उगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सो व्हेन आई डिस्कस्ड विद देम कि विद आवर फॉरेन पार्टनर्स कि सर आपके यहाँ कैसे होता है। So one of the things that they told me is that in the Western world, there is no nursery without slow release fertilizers. They don't use urea, DAP, whatever. All the nurseries by default use slow or controlled release fertilizers. तो आज की टॉपिक में हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये क्या है, एंड उसके बेनिफिट्स क्या है, नर्सरीज के इश्यूज क्या क्या है, उसके उसमें प्राइमरी तौर पे मैं 3 इश्यूज पे ध्यान दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट है, रूटिंग है, वो कैसे अच्छे करे, फ्लावरिंग ब्रांचिंग चाहिए तो क्या करना चाहिए, और जो डॉक्टर अवनीश कुमार जी ने अभी बात की कि स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम कैसे थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं अपने प्लांट को। तो ये 3 इश्यूज मैं कवर करूंगा। तीसरा टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन मेथड्स, ये अगर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में थोड़े से ट्रायल रिजल्ट्स जो हम पिछले 14 सालों से ट्रायल करते आ रहे हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक ही स्लाइड है उसके लिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर, CRF जिसको बोलते हैं, लोग उसको स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। तो ये क्या है? सो कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स बेसिकली ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं कि जो न्यूट्रिएंट है, NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें जो कुछ भी रहेगा उसको दीर्घ काल तक उसको रिलीज करते रहते हैं। दे रिलीज द न्यूट्रिएंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दे स्टार्ट फ्रॉम 3 months, 6 months, 12 months, और समटाइम्स इन 18 months ऑल्सो। सो दीज फर्टिलाइजर्स बेसिकली एक बार अप्लाई करने के बाद आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 18 महीने कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बेसिक फायदे जो है कि अगर आप इसको बार बार, कोई फर्टिलाइजर आप बार बार नहीं डालते हो, तो इट इज गोइंग टू सेव योर लेबर कॉस्ट। इट इज वेरी इजी टू यूज। कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स कम विद पॉलीमर कोटिंग। सो जो केमिकल है फर्टिलाइजर का, वो आपके रूट्स के कांटेक्ट में नहीं आता है। सो बिकॉज इट डजंट कम इन कांटेक्ट विद द रूट्स, you can apply it very easily in the media. There is no burning. एक्चुअली जो बर्निंग रूट्स पे होता है वो कभी कभी लीव्स पे भी दिखता है। तो कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज आर मेड फ्रॉम वेरी प्योर मटेरियल, सो टॉक्सिसिटी नहीं आएगी प्लांट को। ज्यादा भी डोज हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि वो लेता ही नहीं, जितना चाहिए उतना लेगा, बाद में बंद हो जाएगा। उसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं है। जैसे कि हमको सोडियम की टॉक्सिसिटी आती है नॉर्मल फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद। सिंपल वाटर सोल्यूबल भी अगर आप स्प्रे करते हो तो यू गेट सम प्रॉब्लम्स विद टॉक्सिसिटी। वो नहीं आती है इसमें। इट रिड्यूसेस एप्लीकेशन कॉस्ट, एंड सबसे बड़ी चीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, कि एनवायरमेंटल लॉसेस, लीचिंग लॉसेस है। वैसे अगर देखा जाए तो द फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी is anywhere between 70 to 80% और less than that. So actually 20% efficiency है, 80% वेस्टेज होता है। So ये वेस्टेज क्यों होता है? वोलेटिलाइजेशन के कारण होता है, हवा में उड़ जाता है या पानी में घुल के इट बेसिकली लीचेस आउट इनटू द सॉइल, एंड इट इज नॉट अपटेकन बाय द प्लांट. Up 20 to 30% of the nutrients that we give are taken up by the plant. So बाकी का तो environment में जाता है, so which is a waste of money for you as nursery people and also farmers. So controlled release fertilizers help solve all these problems. Somebody is very happy. So
Please, sorry to interrupt you, sir. Yeah. Please don't do the scratches on the screen. He's giving a very informative. This is a very informative session. आपको बहुत अच्छा सा ज्ञान मिल रहा है, उसका यूज कीजिए. Don't disturb it, please. It's a humble request to all those who are doing these such things. Please don't do it. Sir, please go ahead. Sorry. Yeah, no problem, no problem. Thank you very much. So पिछले 14 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, उसका फल अभी हमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. We've been participating in Indian Nurserymen's exhibitions, and now people are inviting us to share what we have, and a lot of people are using this. It's been a very exciting journey. तो what do CRFs do? Benefits क्या है उसके? The first and foremost is basically it improves the quality. So in terms of quality की definition क्या है? So you get a better root system, you get more flowers if your plant is a flowering plant, and your foliage is green. ये green foliage क्यों आता है? Because all the products that we sell basically contain NPK, they contain magnesium, they contain sulfur, they contain trace elements. कैल्शियम छोड़ के, एक्चुअली एक प्रोडक्ट में कैल्शियम है, बाकी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम नहीं है, स्लो रिलीज वाला. तो ये सब सारे न्यूट्रिएंट्स एक बॉल में होने के कारण ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं आती, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की नहीं आती है और प्राइमरी की भी नहीं आती है. So you can see excellent growth of your plants either in the nursery or outside of the nursery. सबसे बड़ी चीज सबको जो सताती है कि यार प्रॉफिट चाहिए, एंड हाउ डू वी हेल्प नर्सरीमैन और फार्मर्स इंप्रूव द प्रॉफिट. पहली चीज तो ये है कि ये बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता है. सो एक बार अप्लाई करने के बाद आपको 3-4-5 महीने बाद ही दूसरा डोज इसका देना है, अगर प्लांट तब तक आपके पास रहे तो. लेबर बच जाता है, इट गिव्स अ हायर यील्ड. हायर यील्ड का एक एग्जांपल ये है कि सबसे पहले जो हमने ट्रायल्स किए थे 2007-8 में इसके, वी ट्राइड इट ऑन अ पपाया नर्सरी. And papaya nursery में normally it is a 45 to 50 day cycle in the nursery plant बढ़ने के लिए. जहां पे हमने ये कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर जो बासाकोट है, एक ब्रांड जो हम बेचते हैं, उसको ट्राई किया था. वहां पे 8 से 10 दिन वो पहले मैच्योर होगा, स्टेम थिकनेस अच्छा आ गया, द प्लांट हाइट वाज द सेम एज व्हाट इट वुड हैव बीन इन 45 डेज. सो यील्ड ज्यादा आ सकती है, उतनी ही स्पेस में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो. क्वालिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है, बिकॉज आपके रूट सिस्टम है, पत्ते हैं, ब्रांचेस है, स्टेम्स है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के आते हैं. एंड सबसे बढ़िया चीज ये प्रीमियम प्राइस लेते हैं मार्केट में. हमारे जो अभी कुछ कस्टमर्स हैं जो सक्यूलेंट्स बनाते हैं या स्पेशल एग्लोनिमास वगैरह बनाते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, बट दे बेसिकली हैव देयर डिमांड ऑर्डर बुक फुल. वो बोलते हैं कि मेरा महेश आप इस पे व्हाट्सएप पे पोस्ट मत करो मेरा फोटो, क्योंकि मैं जितना बनाता हूँ उतना तो बिक ही जाता है. सो ये प्रीमियम प्राइस में बिकते हैं, एंड उसके कारण अगर प्राइस अच्छा मिल रहा हो और खर्चा कम हो रहा हो तो नेचुरली आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है. तीसरी चीज इसकी है कि हेल्दी प्लांट्स आते हैं. हेल्दी क्यों आते हैं? द फर्स्ट रीजन इज दैट यू गेट अ कंटिन्यूअस फीडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर आप ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर डाल रहे हो, जैसे कि यूरिया डाल रहे हो, डीएपी डाल रहे हो, या कोई और डाल रहे हो, या फोलियर सप्लीमेंट भी दे रहे हो, तो उसका लाइफ मीडिया में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक होता है. फॉस्फोरस ज्यादा दिन टिके रहता है, अगर वो लीच आउट ना हो या फिक्स ना हो तो यूजेबल होता है. बट अदर देन दैट नाइट्रोजन तो 3-4 दिन में ही उसका काम खत्म हो जाता है. तो एक बार आप देते हो, उसके बाद अगर नेक्स्ट फीडिंग 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद करोगे, तो बिटवीन डे 3 एंड डे 15 द प्लांट इज स्टार्विंग, उसको कुछ नहीं मिल रहा है. तो विद कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स ये फर्टिलाइजर छोड़ता नहीं है, उतना ही छोड़ता है जितना प्लांट को जरूरी है. प्लांट उतना अपटेक कर लेता है और उसके बाद में वो धीरे धीरे रिलीज करता रहता है. इसके कारण ये जो प्लांट है, इट इज नेवर स्टार्विंग, इट ऑलवेज इज वेल फेड, और कंटिन्यूअस फीडिंग के कारण उसका हेल्दी होता है. जैसे माल नरिश्ड हम देखते हैं अफ्रीका में वगैरह, जो फोटोज देखते हैं माल नरिशमेंट के, तो वैसा इस केस में प्लांट्स के लिए नहीं होता है. दूसरी चीज ये है कि अगर उसको अच्छा खाना पीना मिल रहा हो, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, तो प्लांट का स्ट्रेस कम हो जाता है. स्ट्रेस कम होने के कारण डिसीजेस भी कम आते हैं उसको.
एंड तीसरी चीज ये है कि ये केमिकल इसका जो है वो डायरेक्टली रूट्स के कांटेक्ट में नहीं आता है, इसके कारण टॉक्सिसिटी नहीं आती है प्लांट को। तो ये सब चीजें मिलके आपको जो प्लांट दिखता है वो बहुत हेल्दी दिखता है। आपको ये दो एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स है नर्सरी के। यू कैन सी द रूट सिस्टम इन द ग्रीन एग्लोनीमा एंड द कलर इन द रेड वन। It's the customer is very very happy with it। और ये प्रीमियम प्राइस क्यों लेता है? उसका कारण ये है कि बेसिकली अगर सभी चीजें अच्छी हो, उसकी रूट्स अच्छे हो, स्टेम अच्छे हो, लीव्स अच्छे हो, ग्रीन हो ज्यादा, तो यू विल गेट मोर फ्लावर्स विद ब्राइटर कलर्स एंड बिगर साइजेस, जिसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार है। यू ग्रो हेल्दी प्लांट्स। सो और एक चीज इसकी ऐसी है कि इफ यू यूज CRF इन योर नर्सरी, द प्लांट व्हेन ट्रांसप्लांटेड एट द कस्टमर, या अगर घर में हो या फिर फील्ड में हो या कहीं पे भी हो, इट टेक्स सम न्यूट्रिएंट अलोंग विथ इट। समझो अगर आपका जो प्लांट है नर्सरी में, उसका 90 डेज का साइकिल है, और आप ये CRF उसमें डाल के दे रहे हो, CRF 6 महीने का है, आपने उसमें डाला है, तो वो 4 साढ़े 4 महीने तक हमारे एनवायरनमेंट में आराम से काम करेगा। सो जब ये पौधा फील्ड में जाएगा विद द CRF इन द इन द ट्रे, तो व्हेन इट इज ट्रांसप्लांटेड उसको न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। So it's going to not succumb to a lot of transplantation shock। उसका थोड़ा शॉक जो है, स्ट्रेस है, वो कम होगा। और अल्टीमेट जो एंड यूजर है आपका, जो अगर घर का कस्टमर हो या फिर फार्मर हो, ही इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी बिकॉज योर प्लांट्स आर गोइंग टू सर्वाइव बेटर इन द रियल लाइफ एनवायरनमेंट। So because of this, you can also charge a premium, and they are used in orchids, जरबेरास, ये सब एप्लीकेशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली के लिए मैंने अब बात किया कि लीचिंग लॉसेस नहीं होते हैं। इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। Some of the products, not the CRFs, but they increase the water holding capacity, reduction in the pollution of groundwater, soil and atmosphere। So ये सब पूरा जो pollution हम we don't want to be a source of that kind of pollution जहाँ पे हम पानी प्रदूषित कर रहे हैं। Already lot of nurseries are facing a problem with the quality of water। RO systems बिठाते हैं, it's a very expensive proposition। By adding more chemicals, more fertilizers to the water, we are worsening the situation by increasing the EC and the pH and other things of the water। So we don't want to be a contributor। So जितना चाहिए उतना ही nutrient डाल के we will ensure that the nutrient goes into the plant and not in the water or in the air। So इतना सब तो मैंने benefits बोल दिया ना। You would be wondering कि how does it work, ये काम कैसे करता है। Most of you would be knowing, and I with due respect to them, I would repeat how these things work। सो बेसिकली कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि आपने साबूदाना देखा होगा, तो इट्स लाइक अ ग्रैन्यूल, साबूदाना जैसे सर्कुलर होता है, समटाइम्स अनइवन शेप का भी आता है वो। सो इट्स बेसिकली अ बॉल विच इज अबाउट 3 millimeters इन डायमीटर, एंड एवरी ग्रैन्यूल, ये हर एक जो दाना है उसमें जो डिसाइड किया हुआ है उतना न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको मिलता है। NPK हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, मैग्नीशियम, सल्फर हो, वो हर एक दाने में होता है। बस उसके ऊपर हमने एक कवरिंग चढ़ाया होता है। ये जो आपको कवरिंग दिख रहा है यहाँ पे, आई जस्ट टर्न ऑन द पॉइंटर। सो दिस इज द पॉलीमर कोटिंग। ये अंदर जो है ये सब न्यूट्रिएंट्स है, और बाहर है ये पॉलीमर कोटिंग है। पॉलीमर कोटिंग में छोटे छोटे होल्स है, एंड जैसे ये ऐसे दिखता है वैसे ही वो नॉर्मली होता है। तो ये काम कैसे करता है? अगर काम तभी करेगा जब तीन चीजें होगी। First thing is that it has to come in contact with the media। Second one, it has to come in contact with the water। और तीसरी चीज है, it has to come in contact with the root system। अभी इसमें पानी डालने के बाद क्या होता है कि इस पिक्चर में जो दिखाया है, द सेकेंड पिक्चर, यहाँ पे अंदर पानी जा रहा है, ये होल्स के थ्रू ये पानी अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद इसका सोल्यूशन बनेगा। सो पहले तो सिर्फ पानी होता है, बाद में जाने के बाद ये नाइट्रोजन का सोल्यूशन बनेगा, पोटेशियम का बनेगा, फास्फोरस का बनेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बनेगा। और उसके बाद में ये फोर्थ फीचर जो है यहाँ पे, ये फर्टिलाइजर का दाना जो है वो धीरे धीरे वो फर्टिलाइजर्स बाहर छोड़ने लगेगा, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। बाहर अगर नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन कम रहेगा तो ये अंदर से नाइट्रोजन बाहर भेजेगा। जब तक भेजता रहेगा तब तक ये इक्वल नहीं होता है।
अगर पौधा बाहर यहाँ पे अपने रूट सिस्टम है, सो यू हैव योर प्लांट रूट्स हियर, ये जैसे ही आप नाइट्रोजन ले लेता है तो बाहर नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन कम होगा, तो अंदर से बाहर नाइट्रोजन आएगा और इट विल स्टे इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो ऑस्मोसिस पे ये काम करता है। सो थोड़ा रिव्यू करने के बाद, सो कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स आर पॉलीमर कोटेड फर्टिलाइजर्स, जिसमें कि छोटे छोटे होल होते हैं जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन बनता है, और प्लास्टिक कोटिंग होने के कारण वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन अपने अंदर रख लेता है तब तक जब तक पौधे को जरूरत ना हो, और वो धीरे धीरे उसको रिलीज करता रहेगा। सो दिस इज हाउ कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स वर्क। उसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको खरीदना हो तो क्या देखना चाहिए आपको? इवन थिकनेस चाहिए, पॉलीमर कोटिंग चाहिए, सबसे बड़ी चीज है क्लाइमेट अडेप्टेड रिलीज। मैंने 2-3 स्लाइड पहले बोला था कि 6 मंथ्स का अगर यूज करोगे तो हमारे यहाँ वो 4-4.5 महीने चलेगा। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऑल ऑफ दीज, देयर आर टू सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी इंपोर्ट दीज फर्टिलाइजर्स, वन इज फ्रॉम जर्मनी, वन इज द अदर वन इज फ्रॉम जापान, एंड दे आर रेटेड फॉर वर्किंग ऑन 25 डिग्री सेल्सियस सॉइल टेम्परेचर। हमारे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉइल का, हालांकि सॉइल का टेम्परेचर एम्बिएंट से कम होता है, बट क्लाइमेट अडेप्टेशन क्या करता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मेटाबॉलिक रेट प्लांट का बढ़ता है, पौधा ज्यादा बढ़ता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसकी भूख ज्यादा होती है, तो ये जो फर्टिलाइजर है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट बाहर छोड़ेगा, तो प्लांट आपका कभी भूखा नहीं रहेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेड रिलीज। व्हेन द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द प्लांट इज हायर, द फर्टिलाइजर विल रिलीज मोर न्यूट्रिएंट्स and the plant will get what the plant is asking for. जितनी उसकी भूख है उतना उसको खाना मिलेगा। द लास्ट वन इज ट्रेस एलिमेंट सप्लाई। सस्ते भी आते हैं लेकिन उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ऑल द ग्रेड्स दैट वी सेल कंटेन ट्रेस एलिमेंट्स। बेनिफिट्स हमने देख लिए हैं, मैंने वापस नीचे डाल दिए है कि हेल्दी रूट्स एंड फोलिएज आता है, बेटर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, एंड इंप्रूव्स लेबर प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली द गोल इज टू इंप्रूव प्रॉफिट ऑफ द नर्सरीमैन एंड टू मॉडर्नाइज एंड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। जैसे कि आईएनए अभी प्रेजेंटेशन के दौरान बोला गया था कि दे विजिट अ लॉट ऑफ डू अ लॉट ऑफ विजिट्स अब्रॉड, तो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। अगर एक्सपोर्ट करना हो तो इट्स वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कि यू कैन नॉट एक्सपोर्ट सॉइल to all of these advanced markets. So CRFs is a very good solution where you're using a soilless media, jahan ki there is no inherent nutrition in the media. So after looking at this controlled release fertilizer, there is one issue. There are three issues I want to touch upon. Is how what are the three issues that we see that the nurserymen are facing, and how we can mitigate those. सो द पहला इशू जो हमने लिया है कि रूटिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये अगर बच्चा अगर जन्मते ही अच्छा होगा, विगर उसको अच्छी होगी, रूट्स अच्छे होंगे, तो इट विल सर्वाइव बेटर थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो ये जो रूटिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली ये सीआरएफ जो है, बासाकोट प्लस एक ब्रांड है, न्यूट्रीकोट इज अनदर ब्रांड दैट वी हैव। सो ये दो ब्रांड्स सीआरएफ के लिए है, फर्टिलाइजर्स है। बट the important thing is in order to activate establish the routing process, we have a product called turbo root. And what is turbo root? Turbo root is a mixture of humic and amino acids. So आपको दो products उसमें डालने नहीं पड़ेंगे. The humic acid, fulvic acid is from a very reputed source, which is basically coming from American leonardite, very pure. And amino acids are of vegetable origin. So ये दोनों अगर आप साथ में डालोगे तो रूटिंग बहुत बढ़िया होती है। This is one of the trials that we did when we before importing this product into the Indian market. आपको जो राइट में दिख रहा है, it's untreated product. वहां पे भी हालांकि रूट्स अच्छे हैं, but if you look at the treated one, you see excellent white root development. So white root development के लिए ये turbo root बहुत बढ़िया काम करता है। एक बार ये बन जाएंगे तो आपके CRFs अगर आप उसमें डालोगे तो फीडिंग भी कंटिन्यूस हो जाएगा एंड इट विल ग्रो मच बेटर। यू वुड बी वंडरिंग हाउ दीज प्रोडक्ट्स लुक लाइक। मैंने साबुदाना तो बोला था, लेकिन ये सफेद नहीं है। बासाकोट इज ग्रीन इन कलर एंड न्यूट्रीकोट इज ग्रेइश इन कलर। टर्बो रूट इज like a dark brown. Some people, some nurserymen like to call it Coca-Cola. वो बोलते हैं कि मैं मेरे प्लांट्स को कोको कोला पिलाता हूँ।
Coca-Cola में turbo root and water is the solution that they are using. So it looks like Coca-Cola. दूसरा इश्यू जो है वो फ्लावरिंग एंड ब्रांचिंग. बहुत बार ये तकलीफ होती है कि दे वांट बेटर फ्लावरिंग, ब्रांचिंग अच्छी चाहिए. आजकल तो बेसिकली शॉर्ट प्लांट्स का ही सब फैशन है सब जगह पे, ऑर्नामेंटल्स में. इवन मैरीगोल्ड वगैरह अगर फील्ड में भी ग्रो कर रहे हो तो वो भी शॉर्ट ही आते हैं. तो फ्लावरिंग एंड ब्रांचिंग के लिए क्या करना चाहिए? सो उस पर फोकस ये है कि वी बेसिकली हैव टू प्रोवाइड अ कंप्लीट प्लांट फूड, which is one product that I'm going to mention, which is न्यूट्रीकॉम्प्लेक्स गोल्ड 6270. इसको कंप्लीट फूड क्यों बोला है? बिकॉज इसमें तो वैसे देखा जाए तो 6% नाइट्रोजन, 27% फॉस्फोरस है. तो ये फॉस्फोरस इज वेरी यूजफुल फॉर योर ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग. बट अदर देन दैट इट कंटेन्स the total nutrient content of this product is almost 83%, more than 80%, because it has 6% nitrogen, 27% phosphorus. It has 3% magnesium, 3% manganese, 5% zinc, 0.5% boron. Then it has something called glutamic acid. What this acid does is basically it helps the plant survive water stress. पानी कम भी होता है या ज्यादा भी होता है, तो ये जो है वो उसको सर्वाइव करने के लिए मदद करेगा. एंड इट हैज 6% ह्यूमिक एंड फुल्विक इन एडिशन to whatever nutrients it has. So it is a complete plant food. It promotes flowering, promotes bushiness अगर आपको ये जरूरत हो उसकी तो, and it increases stem girth. Stem का diameter बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है. And it's like a water soluble fertilizer. You use it at 2.5 grams per liter as a spray or drenching. तीसरा इश्यू है जो स्ट्रेस रिकवरी एंड ग्रीनरी. डॉक्टर अवनेश सर ने बोला था कि स्ट्रेस इज अ बिग इशू, क्लाइमेट चेंज इज अ बिग इशू, एंड नर्सरी में भी कुछ अलग नहीं होता है. People are facing the problem of stress. We typically like to call it as abiotic stress, which is basically high temperature, low temperature, less water, more water. Anything other than disease and pests is abiotic stress. So अगर कभी ऐसा हो, पानी कम हो, पानी ज्यादा दिया गया हो, या फिर कोई गलत केमिकल स्प्रे किया गया हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको ये होता है कि यार उसको कैसे ठीक करें. दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि स्पेशली इन ऑर्नामेंटल्स या लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स में कि ये प्रोजेक्ट तो तैयार हो गया है, 2 दिन में उसको हैंड ओवर करना है, इट हैज टू लुक वेरी वेरी ग्रीन एंड फ्रेश. तो हम क्या करें उसके लिए? सो यहाँ पे ये जो 2 प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे बहुत अच्छे काम में आएंगे. एंड स्ट्रेस रिकवरी के लिए प्राइमरीली एबायोटिक स्ट्रेस कम करने के लिए, जिसका एग्जांपल आपको दिख रहा है कि वायलेट जो प्लांट्स है, यू आर लुकिंग एट हियर, देयर इज हीट स्ट्रेस. ज्यादा टेम्परेचर के कारण अभी तो चालू होगा. नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड सी, स्प्रिंग फीवर जिसको बोलते हैं, या विद राइजिंग टेम्परेचर्स सम ऑफ द प्लांट्स आर वेरी ससेप्टेबल टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. उसके वेन्स हरे होते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो दैट इज टेम्परेचर स्ट्रेस. सो दैट्स वन एग्जांपल. हीट स्ट्रेस है. यू कैन सी लेफ्ट वाला जो है वो स्ट्रेस में बढ़ नहीं पा रहा है, राइट वाला अच्छे से बढ़ रहा है क्योंकि उसको स्ट्रेस नहीं है. वाटर स्ट्रेस, पानी ज्यादा या कम देने के बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, बट हमको ये ऐसा वाला प्लांट चाहिए. सेम एग्जांपल हियर, विल्टिंग फॉर वॉट एवर रीजन. सो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. वी वांट समथिंग लाइक दिस. सो हमको ग्रीनरी बढ़ानी है, फ्रेशनेस बढ़ाना है, फ्लावर्स और फ्रूट्स का कलर अच्छा करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्योर करने हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? सो वी हैव 2 products that we recommend. Fetilon Combi 2, which is a micronutrient mixture, which is the best brands in the world, one of the best brands in the world. It is a EDTA chelated micronutrient mixture, Maharashtra grade 2. And Ceylon is a seaweed extract. It is a potassium rich seaweed extract. So it has, it's made from a seaweed which is rich in potassium. So आपको जो फ्लावरिंग, फ्लावर कलर्स या स्ट्रेस या वाटर स्ट्रेस का जो कंट्रोल करना है उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स would help also in fighting your abiotic stress and curing your micronutrient deficiencies and making the plant look greener and fresher. सो हमने अब तक ये देखा कि कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है. सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया टुडे दैट वी सेल? सो वी हैव 6 products in the range under 2 brands. Basakot Plus is the first brand, which is basically imported from Germany. It comes in 6 months and 12 months variants.
16, 8, 12 NPK, 2 MgO plus trace elements. 12 months में 15, 8, 12 है, 2 मैग्नीशियम और trace elements है. This brand न्यूट्रिकोट comes from जापान. इसकी खासियत यह है कि नासा ने जो दुनिया में सबसे अच्छे कंट्रोल फर्टिलाइजर से वो टेस्ट किए थे स्पेस में ले जाने के लिए, तो दिस वाज द ब्रांड दैट वाज सिलेक्टेड. एंड ये जो ब्रांड हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नर्सरी मैन के साथ हम काम करते हैं उनकी डिमांड थी कि यार ये थाईलैंड में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है या एशिया में बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज हो रहा है, तो आप इसको इंपोर्ट कराओ. पहले तो हम सिर्फ बासाकोट ही कर रहे थे, बट ऑन द डिमांड ऑफ नर्सरी मैन वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग न्यूट्रिकोट इनटू इंडिया, जिसके 4 ग्रेड्स हमारे पास है. एक तो टाइप 180 विच इज बेसिकली 6 महीने वाली ग्रेड है, 13, 11, 11. वेरी गुड फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर्स के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा ये. ये 12 महीने वाला है न्यूट्रिकोट 13, 11, 11, 2 MgO प्लस ट्रेस एलिमेंट्स. न्यूट्रिकोट फोलिएट जो है which is basically for all your indoor plants, leafy plants, जिसमें कि नाइट्रोजन ज्यादा है, 1868 2 MgO plus trace elements. ये 6 महीने के लिए काम करेगा, 180 days. So all your vertical gardens जहाँ पे कि कंटिन्यूअस फीडिंग का प्रॉब्लम आता है आपको, आप उसमें ये बिल्कुल डाल सकते हो. न्यूट्रिकोट या बासाकोट दोनों में से कोई भी एक जो सही हो वो, एंड उसमें यूज करके यू कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द प्लांट बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट. आपको ध्यान होगा कि मैंने बोला था कि ऑल दीज प्रोडक्ट्स कंटेन एवरीथिंग बट कैल्शियम. लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिकैल टाइप 140, which is basically 120023. It contains calcium and nitrogen plus magnesium and trace element. ये कैल्शियम धीरे धीरे रिलीज करेगा. आपको इफ यू आर इनटू ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आपको ये दिखा होगा कि आपके टिप्स प्लांट्स के लीव्स के कभी कभी दे स्टार्ट डाइंग ऑफ, दे येलो हो जाते हैं टिप्स. It is basically because of calcium and boron deficiency. Calcium या boron, and calcium is a bigger contributor to it. So calcium का मैनेजमेंट करने के लिए ये आप स्लो रिलीज वाला जो न्यूट्रिकोट है, ये 140 दिन हमारे यहाँ लगभग 3 महीने चलेगा इसको, तो आप इसको यूज कर सकते हो. एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिलीफ अगेंस्ट दोस प्रॉब्लम्स वेयर यू हैव टिप बर्निंग काइंड ऑफ अ थिंग इन प्लांट्स. तो ये चीजें हैं, वो यूज कैसे करनी है. नॉर्मली ये टेबल है, थोड़ा सा बिजी है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट बेसिकली 2 चीजों में इसको बांटा है. ग्रीन वाला जो है वो मीडिया प्रिपरेशन में हम क्या कर सकते हैं. मीडिया प्रिपरेशन में हमने देखा है कि वी वांट सम न्यूट्रिएंट्स, वी वांट अ गुड क्वालिटी ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड उसमें चाहिए ताकि रूटिंग अच्छा हो. तो उसके लिए वी यूज बासाकोट एट 3 to 5 grams per liter ऑफ सबस्ट्रेट. समझो 1000 लीटर का आप मीडिया ले रहे हो तो उसमें 3 से 5 किलो आपको डालना है, एंड 1 लीटर टर्बो रूट. सो ये टर्बो रूट जो है वो आपको ह्यूमिक, फुल्विक एंड एमिनो एसिड्स देगा. बासाकोट आपको एनपीके, मैग्नीशियम, सल्फर एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स देगा. ये मीडिया प्रिपरेशन के टाइम पे आप एक बार कर सकते हो, आपके पॉट्स या ट्रेस है उसमें भर के प्लांट्स आपके लगा सकते हो, एंड यू कैन गो अहेड. एम आई डूइंग गुड ऑन टाइम और शुड आई स्पीड अप? The second method is basically we talked about flowering, branching and stress. तो these are foliar applications जहाँ पे न्यूट्री कॉम्प्लेक्स गोल्ड आपको 2.5 grams per liter के हिसाब से स्प्रे करना है. Ceylon and Fetalon Combi 2 for stress together it is 2 ml per liter and 0.5 grams per liter as a spray. नीचे अगर आप ऑर्नामेंटल्स कर रहे हो तो डिफरेंट साइजेस ऑफ पॉट्स के लिए कितना डालना चाहिए न्यूट्रिकोट या बासाकोट, ये स्टैंडर्ड डोसेस उसमें दिए हुए हैं. So I am nearing the end of my presentation. We are looking at some trial results. You can see various applications. Some of them are in the, actually all of them are in the field. One of them is a nursery example. I didn't have the papaya example. I should have pulled it up. But see, you can see in lawn, treated, gives a dark green color, dense grass है यहाँ पे, and untreated में आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा rare है, coloration थोड़ा सा off है, and you could make out this difference from 100 meters. This has been done at a public garden in Pune, Pula Deshpande garden करके corporation का garden है. We had tried this product there in 2007 and fantastic results. पपाया में दिस इज एट IARI का वायरस रिसर्च सेंटर है पुणे में, जहाँ पे वायरस पे वो काम करते हैं. सो वी हैड पुट 10 grams of बासाकोट इन दिस प्लांट एंड नथिंग हियर.
So you can see the health of the plant. एंड जनरली ऑब्जर्वेशन ये था कि जहां पे बासाकोट डला हुआ है वहां पे अबाउट 20 to 25% हाइट इंक्रीज है ओवर 4 वीक्स. ये रिजल्ट इमीडिएटली नहीं देगा. एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया कि बासाकोट न्यूट्रीकोट आप डालेंगे तो यू कांट एक्सपेक्ट अ ओवरनाइट रिजल्ट. उसको डालने के बाद 3rd 4th वीक में आपको अच्छे रिजल्ट दिखने को आएंगे. दिस इज एग्लोनीमा. प्रीमियम प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो वेरिगेशन अच्छा हो, कलर्स अच्छे हो, तो इसका ये एग्जांपल है. यू गेट अ वेरी गुड कलर. जैसे नेचुरली आना चाहिए वेरिएशन, जैसे नेचुरली कलर आना चाहिए वैसे इसमें ये आ जाता है. एंड ये एक ही नर्सरी का, यू कैन सी उसमें 4 पौधे छोड़े थे विदाउट ट्रीटमेंट के. एंड दिस इज द अनट्रीटेड वन एंड ये ट्रीटेड वाला है. दिस इज इन द फील्ड. फ्लावर्स वहां पे दिए हैं. यू कैन सी दिस इज अनट्रीटेड, यहाँ पे यूज नहीं हुआ है और यहाँ पे यूज हुआ है. You can see the number of flowers. Farmer का जो yield है वो benefit है. Actually chrysanthemum के लिए there is an example where उसका जो with the new varieties of seedlings the plant lasted in the field for more than 12 months. February में लगाया था, गुड़ी पाड़वा के दिन, उगाड़ी के दिन उसको उसने तब तक वो हार्वेस्ट कर रहा था. एंड इन द लास्ट मंथ बिफोर गुड़ी पाड़वा और उगाड़ी, whatever you want to call it, उस टाइम पे he made so much money कि he basically recovered the entire cost of his cultivation. So this is only possible with new technology, nutrition and new management of your crops. Seed of course is a very important thing as Dr. Avanesh said, but उसको परवरिश कैसी करनी है, how do we take care of it is also very important. We shouldn't be giving them more chemicals more than necessary. And one thing which I forgot to tell, Nutristar International and our sister company Dharshri Agro Industries, we deal with only non-poisonous products. Residue free products हमारे आते हैं. Our biggest customers are not nurserymen but are farmers, people who grow grapes for export, pomegranates, what ये vegetables हो, tomato, भिंडी, जो कुछ भी grow करते हो export के लिए, those are our primary customers because these are very studied and studied people just like the modern nurserymen today. This is an example also in a place called Sarasbag. It's again a corporation park in Pune. So you can see it is treated here and untreated here. They had put about 4 to 5 granules per plant, and you can see the difference. Same bed में है, कोई अलग नहीं है, एक ही park में है. The employees of the corporation had put those 4 to 5 grams granules, 4-5 दाने डाले थे उसमें हर एक plant में, and you can see the difference after 4 to 6 weeks. So these are the benefits. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वालिटी कैसी बढ़ती हो, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा इससे, ये आपके ध्यान में आया होगा. बिकॉज प्रोडक्ट प्रीमियम अगर यूज करेंगे तो प्रीमियम प्राइस ही आपको मिलनी है. एंड बीइंग द गुड नर्सरीमैन दैट यू आर, यू वुड लेफ्ट विथ नो चॉइस, क्योंकि वी कांट यूज सॉइल ऑल द टाइम and the use of soil is also reducing. The same thing after nursery, you can also use it in landscaping. These are all not real pictures. Pictures real है लेकिन हमारे नहीं है, but landscaping में भी इसका अच्छा use हो सकता है. And the benefit is that एक बार डालोगे तो आपको 3-4 महीने 6 महीने कुछ डालना नहीं पड़ेगा. And you get a very good aesthetic effect जो आपको चाहिए कि you want a greener lawn, you want a greener leaf, you want better flowers, bigger flowers, and the customer doesn't want to manage all of those things. ये मैनेजमेंट की जो हैसल है, बार बार उसको फर्टिलाइजर दो, स्प्रे करो, खाद डालो, ये अगर आपको नहीं करना है तो कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर दीज एप्लीकेशंस. सो लैंडस्केपिंग में इसका यूज हो सकता है. यू कैन यूज इट इन वर्टिकल गार्डन्स. अ न्यू एरिया वेयर पीपल आर यूजिंग दिस अ लॉट इज सक्यूलेंट्स, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन your green walls. So this is all I have. So we talked about controlled release fertilizers, what they are, what they can do to the plants and to your business and to your profit, and how we can resolve some very important issues like rooting, branching, flowering, and freshness and stress reduction. So ये चीजें हमने इसमें cover की है, and I would like to thank the Nurseryman Association for giving us an opportunity. In fact, I would not like to look at it as a sponsorship. It's more of a partnership, wherein both the Nutristar International and the nursery people could benefit together.
and we believe in giving value to our customers. Some of you might have used the product, some of you may not, but I would urge you to take a look. And thank you very much. Thank you very much, Mahesh sir. You have given a very nice information about your products, and overall, it was a very great informative session. So thank you very much Thank once you. again. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much again. And I request both the speaker, Dr. Avanesh sir and Dr. Mahesh sir, there are a few questions in the chats. If you answered it in the chat, that will be great for us. So even you can share your cell number in chat also. So all the participants will get the benefits from it. So thank you very much. Now we are with us Dr. Ranjana Tiwari Madam, Managing Director, Gunjan Seeds and Agrochemicals, SS Agrochemicals and Fertilizers Private Limited. Earlier, she was the head of the Department of Agriculture, Genetics and Plant Breeding at Mangal University, Aligarh. Now she's the Managing Director at Gunjan Seeds. So we are anxiously waiting for her speech and presentations. So I welcome her on behalf of Indian Nurserymen Association, and I request her to give her a presentation. So over to you, madam. Thank you, sir. I welcome all and thanks to Nurserymen Association for giving us this wonderful opportunity to speak or to give our views on this such a platform. Thank you, sir. The topic today I'm going to speak is open pollinated and hybrid varieties with respect to vegetable crops. Actually, nurseries or the farmers who are growing the crops get often confused what to choose or what to sell, the hybrid varieties or the open pollinated varieties. How? So we can solve this query with certain concepts. First of all, what is hybrid seed? Any plant variety that has been developed through a specific controlled cross of two parent plants. Hybrids are often spontaneously and randomly created in nature when open pollinated plant naturally crosses or pollinate with other related varieties. Plant breeders produce hybrid seed that combines the desired traits of two pure parent lines in the first generation. Well, technically talking, hybrid variety is the first generation F1, which has been crossed between two pure lines, inbreds, OPVs, clones, and other populations that are genetically dissimilar. So, hybrids can be of many types, like first, the single cross hybrid, double cross, three-way hybrids, and the top cross hybrids. But to produce any hybrid variety, one must know the principles of seed production, techniques of seed production, and the crop botany, which is very important. If you don't know the crop botany or the time or the period at which the stigma is or stigma will be receptive or the anthesis will occur, you will face a lot of challenges during production of any hybrid variety. Mechanisms which have been used like hand emasculation, hand pollination in crops like tomato, eggplant, sweet pepper, okra, hot peppers, removal of staminate flowers and hand pollination in cucurbits. Male sterilities have been used in tomato, hot pepper and sweet pepper, onion, cabbage, cauliflower. Self-incompatibility and the natural pollination has been used in cabbage, petunia, marigold. Other methods like gynoecium and removal of staminate flowers have been used in cucumber and other cucurbits. For emasculation and pollination, it's a simple process. All breeders are very much aware, even few of the farmers which get technically trained are using this method to release many of the varieties. Many of the farmers' variety have been released using emasculation and pollination method. During emasculation, one has to just emasculate or remove the anthers before they get anthers, or the dehiscence occurs or the pollen self-pollination occurs.
we have to identify the actual stage of the bud at which the emasculation should be done. It is done using forceps or other chemical methods or hot water method also. Then next day you have to collect the pollen and pollinate the desired emasculated plants. There are certain limitations for that. It is time consuming, labor intensive. That is why it increases the cost of production of the hybrids. The hybrid seeds are very costly because of such a time taking and labor intensive work. And especially the skilled labors are required, which are highly paid. Now, what should be the alternate? Should we move to another varieties or to stick to the hybrids? Well, if you see the chart, fruits and vegetables almost occupy 13% market share for hybrids. And leaving hybrids for fruits or vegetables will cause lot of loss. So hybrids is an option and good option. For the vegetables like tomato, the production techniques, hybridization technique has to be used. Emasculation and pollination has to be done. Pollens are collected in glass tube or on a glass plate from the male line and are transferred to the stigma by finger or by inserting the stigma into a glass tube containing the pollen grains. Leftover pollen grain in the glass tube are not used on the next day because of the reduction in the viability. Then certain physiological parameters which can affect the seed yield and the vigor, like prolonged high temperature affects pollen fertility and physiology of the fertilization, leading to the poor seed set, age of pollen and stigma, abundance or scarce pollination, height of inflorescence, and fertilizer application exert an influence on the vigor of the plant. So these also need to be dealt very smartly. Then seed extraction and drying by fermentation method or by acid or alkali method. And by this method, you can get 1 kg tomato produces 3 to 4 grams of the seed. For removing emasculation or for having faster production of hybrids, certain techniques also have been used, like male sterility. Now, male sterility is of different type, like genetic male sterility, cytoplasmic male sterility, cytoplasmic genetic male sterility, or the chemically induced. It is so called because of the sterility gene which is located in the nucleus or in the cytoplasm or in the both. These have different benefits and the losses. The best one is the cytoplasmic genetic male sterility, because in this the restorers are not, the male sterility is not easily restored and the hybrid production is ensured. While in others, because of the temperature or other physiological conditions, many a times the male sterile plant gets restoration of the fertility and the self-pollination can occur. Certain other crops like eggplants and peppers have been also used to make the good hybrids. The methods, again, with the same emasculation and pollination, hybridization technique. Stigma is receptive a day prior to the anthesis in the eggplant, but pollination is possible. And in sweet pepper, emasculation is done prior to anthesis, whereas pollination done in the morning on the day of anthesis. Natural cross pollination ranges from 0.2 to 46.8% in the egg flowers. Now, seed extraction, eggplants harvested 50 to 55 days after anthesis, sweet pepper 60 to 65 days after anthesis, and the ripe fruit crushed and seed separated by washing dry air at 28 to 30 degrees centigrade. Almost you get seed yield of in eggplant 150 to 200 kgs per hectare, while in pepper 100 to 200 kgs per hectare. Manifestation of the heterosis. Heterosis in sweet pepper ranges 35 to 40%, and in eggplants 50 to 150%. In eggplants, it is manifestation by earliness, fruit number per plant, and the fruit weight. Sweet pepper, plant height, days to flower, fruit
weight, early and total yield. Use of male sterility in hybrid seed production in eggplant and sweet pepper has been done. Male sterility lines available in eggplants and sweet pepper, but not successfully at commercial seed production. Seed set at male sterile lines range from 46 to 67% in capsicum. The CMS used in the chili pepper to produce F1 commercially by several seed companies. Faster maturation time are the top reason for choosing hybrids. For example, peppers, tomato, eggplant, sweet corn, and butternut squash. Old tolerance hybrids, specific form of the disease resistance. For example, in warm climate, fusarium resistance in tomato, because the tomato fusarium is a common fungus in otherwise healthy organic soil where winters are mild. Genetic resistance to the virus of pepper is hugely important in many hot summer climates, and hybrids have it. Other crops like bulbous crop like onion, where the hybrid seed production technique has also been used for the production of hybrid seed in onion. Male and cytoplasmic female lines have been planted in the ratio of 2:8. Success of hybrid seed production depends upon the pollen distribution pattern from fertile to sterile plants in the cross block. Factors affecting hybrid seed in onion: weak inbred lines, abnormal florets, abort ovules, and excess heat damage of the flower. Seed yield is almost 300 to 350 kgs per hectare. Heterosis in onion may range from 14 to 67%. It is manifested in the uniform of bulb size, bulb weight, and efficient source sink ratio. Male sterility in onions is controlled by combination of cytoplasmic factors piped together with recessive nucleus genes in the homozygous form. In cole crops, manifestation of heterosis is almost 25 to 60% in cabbage, cauliflower 20 to 60%, broccoli 26 to 58%. Manifested by head curd, early maturity, head curd weight, and plant weight. Male sterility and hybrid seed production. Cytoplasmic male sterile lines, their maintainers have been developed in cauliflower, cabbage, and broccoli using reddish cytoplasm, male sterility. Cytosterile plants of the broccoli, cabbage, and cauliflowers are petaloid and large nectaries responsible for bee attraction and good female fertility. And with this, we get 50 to 800 kgs per hectare seed yield. Now in tomato, many of the sterile mutants have been used, like stamenless, which is monogenic recessive, positional sterility, pollen sterility, and functional sterility. Hybrid varieties have been evolved in those high-valued vegetable crops that exhibit marked heterosis. Solanaceous vegetables like tomato, eggplant, sweet pepper, cucumber, roots, and bulbous crops like onion, radish, and carrot. Another method of self-incompatibility has also been used for production of hybrids to lower down a certain amount of cost of production. Now, self-incompatibility is the morphological or the chemical inability of a flower to pollinate. Inability to set seed from pollination of pollen produced on the same plant, or it refers to failure of viable pollen of a given plant to fertilize the ovules of the same plant. It may be of gametophytic or the sporophytic depending upon the gene present. Self-incompatibility occurs almost in more than 3,000 species belonging to 250 genera spread in about 70 families. The superior self-incompatible lines for hybrid seed production should possess the following characters. It must be stable, high seed set of self-pollination at bud stage, favorable and uniform economic characters, and desirable combining ability. Now, why male sterility or self-incompatibility? Because the production of large scale of F1 seed is possible, reduction of the cost of production of hybrid seeds,
speeds up the hybridization process, because whatever the time is required in emasculation, that can be skipped because of these deformities or the qualities. But the commercial exploitation of the hybrid vigor is also very easily done. The steps in hybrid seed production involves production of inbred lines, testing of combining ability, improvement of inbred lines, and production of hybrid seeds. Most hybrid seeds today are created in low-tech, low-cost conditions and under row covers in the isolated field or in greenhouses. Some hybrids are created in labs using DNA methods. The incompatibility methods have been used in cucurbits like watermelon. Steps of hybrid seed production in cucurbit vegetables. Production of inbred lines by inbreeding for 3 to 5 generations. Selection of inbred plants. Production of hybrid seeds and maintenance in inbred plants. Pollination can be done either by the artificial method or with the removal of male flowers and use of insect for pollination. Techniques of seed production, maybe hybrid seed of watermelon can be produced by 2 ways, through artificial production or removal of male flowers and use of insect pollinations. In bottle guard, production of inbred lines, emasculation, bagging of male and female flowers, and selecting the vigorous inbreds after 3 to 4 generations. Planting of female and male inbred plants in the ratio of 4:1 ratio, spraying 50 to 100 ml of ethophone per liter of water on pistillate parent to increase the female flowers. Bagging of flowers, harvesting of fruits after 60 days, and removing the seeds from the fruit. Wash and dry for 3 to 4 days and sun dry for 3 to 4 days. Preserve the seed in the seed polythene bags at low temperature of 4 to 5 degrees centigrade. Maintenance of inbred parents. Inbreeding of the parents to produce seed should be done when the parent stock is depleted. Produce large quantity of seed to maintain genotypic and phenotypic integrity of the hybrid. Certain hybrids have been released, like in cauliflower, Pusa vitex, Sarda melon in Pusa sarda, cucumber, Pusa seedless cucumber 6, musk melon, Pusa madhurima, round melon, Pusa ronak. Certain synthetic varieties have also been released. Now, the concept of hybrid and synthetic varieties in many people have overlapping. Now, to differentiate, one must understand mostly the hybrids are successful in self-pollinated crops. But if the crop is cross-pollinated, then what should be the option? Then synthetics and composites find the better option. A variety produced by crossing in all combinations and number of lines that combine well with each other is known as synthetic variety. Now, GCA and SCA are the basis for which the varieties have been developed. The hybrid varieties are generally combined on the base of SCA, while the composites and synthetics are combined or selected based on the general combining ability of those lines. Synthetics are crossing in all combination of number of lines that combine well with each other, while composites mixing the seed of several phenotypically outstanding lines, it and encouraging open pollination to produce crosses in all combination among the lines. 4 to 10 number of parents are involved in synthetics, while many parents can be involved in the composites because the seed is not tested genetically, it is just mixed based on the phenotypic characters. The advantage, the ability to cross the genetic material of two different but related plants. And with this, we get the chance to create new edible novel fruits like canola, purpless cucumber, seedless watermelons, etc. Why hybrids are basically adopted by farmers? Because of the high productivity, longer harvest duration,
best adaptability, better tolerance, uniform produce, better market acceptability, and better nutritional qualities. Crops like broccoli is also outcome of hybridization. Farmers who have the money to buy them year after year, including greater yield, improved pest resistance, and more. The hybridization has got popularity in 1960s with the Green Revolution, aimed to increase the grain yield worldwide by promoting the use of hybrid seed varieties that could be densely planted and required irrigation, mechanization, and the heavy application of the chemical fertilizer and pesticides to get higher yield. Hybrid F1 varieties of broccoli often outperform the standard open pollinated types. These are the vegetables like broccoli and other cabbage family crops for which the OPVs are not simply good. The slow growth rate and lack of uniformity among many open pollinated varieties make them inferior to most of the hybrids. Now, certain hybrids in cucurbits which have been released for general cultivation, like in melon, you have Pusa Rasraj, watermelon, Arka Jyoti, cucumber, hybrid number 1, bottle gourd, Pusa Manjari, and in bitter gourd, you have Pusa hybrid. In 1990, almost 95% of the developed countries' farmers and 40% in the developing countries used Green Revolution hybrid seeds. Greater in Asia and followed by the Mexico and Latin America, resulting almost 75% of the world food diversity loss. Control over seeds shifted from farming community to the handful of multinational corporations. Major constraints of hybridization, like because I said F1 or the hybrid seeds have high cost, lack of awareness among the growers, unorganized marketing system for vegetables, lack of post-harvest management techniques, non-availability of quality seeds, non-availability of other inputs or proper time, non-availability of biotic stress resistance hybrids. Then there the concept of open pollinated seeds or open pollinated varieties arise because hybrids have high cost. Many people don't have that technical support to grow hybrid varieties. Then what should be the options for them? For them, the option is the open pollinated seed. What is open pollinated variety? A seed produced from cross-pollinating two same variety plants, usually by wind, birds, or insect, resulting in similar plants but natural varied. Raising OP plants require proper isolation distance to maintain selection and replanting OP seeds varieties benefits traits. OP varieties have same characteristics as that of their parents. Open pollinated varieties are oldest method of producing seeds, allow random mating, variation in plant types are normal, good for seed saving seeds, genetic drift constraint. 36, 35. Constraint issues, seed generally low cost and include more heirloom varieties. Most of the sweet, juicy, large fruits and vegetables we enjoy today, like corn, potatoes, and squashes, are improved and selected over many generations from their bitter, small, barely edible ancestors using OPV methods. Certain OPV varieties that have been released, like in melon, we have Kashi Madhu, Kashi Sharbati, watermelon, we have Durgapura Meeta, Sugar Baby, Bitter Garden Priya, pumpkin, we have Pusa Vishwas, Arka Chandan, Cucumber, Swarna Ageti, and many other varieties have been released and even more accepted by the farmers and the nurserymen are the open pollinated varieties. Open pollinated varieties perform good, especially in case of leafy lettuce, peas, beans, and other legumes. Many mixture of OP strains like kale, mustard, vegetables like squash, melon, tomato, to maintain their strains, some seeds have to be saved every after 3 years. Heirlooms, the certain varieties which have been passed generation to generation, those OPV varieties are known as
heirlooms because they have similar characters as that of their parents. Which is better, hybrid or heirlooms? Now, heirlooms basically have shorter shelf life, but better produce or better taste, less uniform shape and color, and can be preserved. Their seeds can be preserved. While hybrid seeds cannot be preserved, but their shelf life and their texture and color and shapes are much uniform and better compared to the heirlooms. Heirlooms are often referred as desi varieties. Now, OPVs or hybrids. OPVs generally seed requirement can use farmers for generation to generation. OPV varieties के जितने भी seeds हैं वो farmers save कर सकते हैं और कई generation तक उन्हें use कर सकते हैं. While hybrids every year they have to replace the seed. Cost of seed is cheaper in OPVs, while in hybrids it is much costlier. Characteristics tend not to be uniform, while in hybrids, characters are almost uniform and vigorous growth is achieved. Local acceptance is more of OPVs. Response to fertilizer, hybrids responds more and better to fertilizer than as compared to OPVs. Then ecologically, OPVs are more suitable as compared to the hybrids. There is another major distinction between open pollinated and hybrid seeds. Open pollination varieties are kept well in isolation and offspring saved from seeds are very similar to that of parents, while in F1 they change because of the segregation. This means saved open pointed seed can be made adapted for an area for many growing reasons and seasons and enjoy their produce from generation to generation, which is not the case in hybrids. Which are better, hybrid or open pollinated variety? Now, just to give you a small scenario, you can see from the table that mostly the OPV varieties are more accepted or more grown in the total area as compared to the hybrid varieties or the local varieties. Hybrid and local varieties almost have a similar area they have occupied, while the open pollinated varieties have occupied much larger area. The main reason is because their seeds can be saved and can be grown with the same yield and the same effect, same characters for generations. Now, which is more better? According to me, I say both are better depending upon the need of the variety. Open pollinated varieties are stable genetically and can be grown for generation to generation, while hybrids are first generation results of plant cross between specially selected plants. The plant parentage result in a single generation seed with special characters such as cold tolerance, maturity, disease resistance. Overall effect, which is often called hybrid vigor, is better of hybrids. Advantage of hybrids over OPVs: more intense heterosis for yield and other important characters. Interpopulation heterosis is considered for most crops. High level of interpopulation heterosis can be achieved. Single cross hybrids are generally higher yielding. Uniformity, like because of all individuals are of similar genotype, hybrids, especially single crosses, show better plant seed uniformity for all traits as compared to OPVs, like disease resistance. OPV with good resistance to boom rape, verticillium wilt, downy mildew, and charcoal rot were developed in Russia in 60s, but they usually comprised high percentage of susceptible plants for each pathogen and parasite due to permanent segregation of resistant genes. Insect resistance uniformity, agronomic traits like height, head inclination are advantage for harvest. Total herbicide tolerance. This conversion is much difficult in OPVs and synthetics due to heterogeneity. For process uniformity in seed size, shape, and color, especially oil product industry needs to meet constant standards. For example, high oleic acid content, homozygosity of the genes of the interest is difficult to accomplish.
Breeding programs for value-added sunflower product development consider inbreeding and hybrids a better option than working with OPVs and synthetics. Advantage of OPVs over hybrids: larger ecological plasticity, gene for self-incompatibility assures a continuous intermating, simpler and lesser expensive breeding procedures, larger disease resistance spectrum. So-called multilinear varieties can be also developed incorporating resistance genes of different races of the same pathogen or parasite, better economic efficiency of seed production, and cheaper seed for planting. These are some of the videos which can be useful if you want to know more about the differences between OPVs and the hybrids. Thank you. Thank you very much, madam, for a very informative session. We have very nicely focused on the breeding aspects, which are very useful in seed production. So thank you very much once again. Now we have with us our next speaker, Dr. Pankaj Srivastava. Sir has 3 years experience in vegetable farm management, 7 years experience in vegetable seed quality control. He has 11 years experience teaching and extension of vegetable science and high-tech agriculture. He always used to work work with farmers in extending their new technology in high-tech agriculture like micropropagation and fertigation, tissue culture and polyhouse cultivation. So he received a fellow award in the field of horticulture extension and farmer services. So we have with us Dr. Pankaj Srivastava sir. So I request Pankaj Srivastava sir to deliver his lecture or presentation on today's topic. So I welcome on behalf of Indian Nursery Association. So welcome to Dr. Srivastava, and I request him once again for his presentation. Over to you, sir. Thank you very much, Mr. Sachin and Mr. Deepak. All the nurserymen are associated on a platform. So I am going to present the topic of today's thematic area, that is vegetable nursery propagation. I am quite lucky that my turn is at last, so most of the things have already been covered by the earlier speakers. So I am going to cover modern techniques of vegetable nursery मैनेजमेंट. ये वेजिटेबल नर्सरी मैनेजमेंट का ओल्ड स्टाइल है. पहले किसानों को वेजिटेबल नर्सरी किसान अपने आप बना लेते थे. दे जस्ट allocate an area on their farm, they prepare the raised bed, sow the seed in lines, and they produce the seedlings of vegetable for the transplanting to the larger area themselves. जो नर्सरी मैन्स हैं, जो दुनिया भर की जो कॉमर्शियल नर्सरीज चल रही हैं, ये लोग ज़्यादातर फ्रूट नर्सरीज के ऊपर या ऑर्नामेंटल नर्सरीज के ऊपर काम करते थे पहले, लेकिन वेजिटेबल नर्सरीज का इतना पॉपुलराइजेशन, कॉमर्शियल वेजिटेबल नर्सरी इतनी पॉपुलर पहले नहीं थी, क्योंकि पहले इस तरह से फार्मर्स खुद अपनी वेजिटेबल नर्सरीज बनाते थे. अब सवाल ये है कि जब फार्मर्स कैन डू द सीडलिंग प्रोडक्शन फॉर देयर ओन बाय सेल्फ, तो ये कॉमर्शियल वेजिटेबल नर्सरी की जरूरत कहाँ से आन पड़ी. उसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर पहले फोकस करते हैं कि व्हेन वी गो फॉर द वेजिटेबल नर्सरी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ए वेजिटेबल नर्सरी पीपल हैव टू फेस. There are 3 problems. One is of germination. Here in this nursery, you can see the germination is not uniform, but farmers doesn't bother about it. Farmers use the seeds. Farmers use the higher quantity seeds, higher than the recommended, and they just meet out their requirement for planting the whole area. यहाँ जर्मिनेशन जरूर कम मिलता था, लेकिन फार्मर्स को उसकी चिंता नहीं होती थी. एक तो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम मोर्टेलिटी की रहती थी. एक डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी होती है जो नर्सरी में बहुत ज़्यादा आती है. वेजिटेबल नर्सरी मैन सबसे ज़्यादा परेशान डैम्पिंग ऑफ से हैं.
डैम्पिंग ऑफ से इतने पौधे मरते हैं कि इसके चक्कर में बीज की कॉस्ट बढ़ती है। तो एक प्रॉब्लम ये डैम्पिंग ऑफ की है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बेसिकली it is a soil borne problem which is due to the Pythium, Fusarium and Rhizoctonia. These three fungus are associated with this damping off. इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, मॉइस्चर एंड soil temperature, everything is related with the damping off. Other two problems are of insect problem. This is leaf miner. बेसिकली ये टोमेटो में या वेजिटेबल्स में फील्ड में ज़्यादा आती है, पर नर्सरी में भी लीफ माइनर्स देखने को मिल रहा है। नर्सरी में भी लीफ कर्ल देखने को मिल रहा है, बिकॉज दिस लीफ कर्ल इज आल्सो स्प्रेड बाय वाइट फ्लाई एंड माइट्स। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, ये नर्सरी में भी आती हैं, बिकॉज vegetable seedlings are very succulent. It is very sensitive. So the attack of disease and attack of insect, vegetables are very vegetable seedlings. Being susceptible or being a succulent in nature, it attracts the problems a lot. ये प्रॉब्लम दूर करना बहुत जरूरी है, तभी हम मॉडर्न नर्सरी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज ओल्ड नर्सरी में तो सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहती थी, पहले भी आती थी, आगे भी आएंगी। जर्मिनेशन की प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम बात करें तो अभी डॉक्टर रंजना ने एक्सप्लेन किया कि वाई हाइब्रिड्स आर बेटर देन द ओपी, एंड ओपी में जो सीड रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा थी, जबकि हम हाइब्रिड्स की तरफ आए तो सीड रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई। टोमेटो में पर एकड़ 200 ग्राम सीड लगता है अगर ओपन पॉलिनेटेड सीड के इस्तेमाल करना है, लेकिन हाइब्रिड्स सिर्फ 60 से 70 ग्राम लगता है। ब्रिंजल में 200 ग्राम लगता है, लेकिन हाइब्रिड्स में 80 से 90 ग्राम लगता है। अगर हम ओकरा की बात करें, ओपन पॉलिनेटेड अगर किसी को बोना है तो 4 से 5 केजी बीज की उसको 1 एकड़ में जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हाइब्रिड बोना है तो सिर्फ 1 केजी बीज में काम हो जाएगा। ये इतना अंतर ओपन पॉलिनेटेड और हाइब्रिड के केस में इतना अंतर क्यों आ गया? इसके पीछे कुछ तो ब्रीडर्स जिम्मेदार हैं। उन्होंने अच्छे बीज, जैसा कि डॉक्टर अवनेश ने बोला था कि अच्छी बीज की जरूरत पड़ती है, तो इन ब्रीडर्स ने अच्छे बीज उत्पादित करके अच्छे हाइब्रिड्स बना के दिए हैं, जिसके कारण जर्मिनेशन परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। दूसरा, जो दयाल सीड्स या गुनगुन सीड जैसी कंपनीज हैं जो हाइब्रिड को प्रमोट कर रही हैं, इनके बीच में इतना नेक टू नेक कंपटीशन है कि ये जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के जर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये नहीं चलेंगे। तो टोमेटो का अभी आप टोमेटो का एग्जांपल लीजिए। व्हाई द सीड रिक्वायरमेंट कितने की है? 1500। हेलो, व्हाई द सीड रिक्वायरमेंट इज सो हाई इन केस ऑफ ओपन पॉलिनेटेड? Because this seed requirement is based on the 70% germination. If the lot is having 70% germination, the seed is okay, because Indian minimum seed certification standard is telling that 70% seed germination is okay. Even for hybrid, the standard is not changed. Standard is 70%, but the companies are providing the hybrids of 99% or 95% germination. 90% से ऊपर जर्मिनेशन तो सभी कंपनीज के हाइब्रिड का आ रहा है। तो ये भी एक कारण है कि बीज बहुत कम लग रहा है। तो सेकंड रीजन इज नर्सरी मैनेजमेंट, क्योंकि जब ओपन पॉलिनेटेड, द सेकंड रीजन इज कॉस्ट ऑफ द सीड। अभी डॉक्टर रंजना ने एक्सप्लेन किया कि द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड इज सो कॉस्टली व्हाइल द ओपन पॉलिनेटेड इज चीप। जब हाइब्रिड सीड इतना कॉस्टली होता जा रहा है, तो ये जो फार्मर्स पहले आधा बीज नुकसान कर देते थे और आधे में ही सेटिस्फाई हो जाते थे, इतने कॉस्टली सीड के साथ ये नहीं चलेगा। इसलिए वेजिटेबल नर्सरी मैनेजमेंट के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ जाना हमें जरूरी हुआ। शुरू में जो कॉमर्शियल नर्सरीज थी वो तो फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो फार्मर्स ने नर्सरी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया। तो मॉडर्न मेथड ऑफ नर्सरी जो विकसित हुआ वो ऐसे विकसित हुआ कि under the protected environment, they cover the nursery area by the shade net. Rather than growing the seeds in soil, they have started to grow in the another media, in the coco peat or in pottery, so that the soil borne disease, damping of जिसका कि मैंने भी जिक्र किया, उसको मिनिमाइज किया जा सके। ये सब करने के बाद भी हम अच्छा प्लांट स्टैंड इन नर्सरी एश्योर कर पाए। मोर्टेलिटी उसके बाद भी है, वो है उसके बाद भी। So this is the intermediate style of nursery.
अभी कॉमर्शियल नर्सरी मैन को वेजिटेबल नर्सरी मैनेजमेंट की तरफ जाने का रुझान इतना ज़्यादा क्यों बना? क्योंकि अभी नर्सरी मैनेजमेंट की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है. नाउ द वेजिटेबल फार्मर्स, they don't want to grow for the vegetable nursery. They just purchase the seed. There are two methods. Either they farmers purchase the seed, give it to a nursery man for the seedling production, and take their seedling back for the transplanting. The another method is that nursery man, they purchase the seed according to the requirement or the demand of the area. They grow the seedlings and they sell it to the farmers. So ये दो method चल रहे हैं. Now farmers are not interested for the nursery development. They want ready seedlings for their field transplanting. So this is the reason modern nursery is becoming popular nowadays. तो प्रॉब्लम हमें कहाँ कहाँ से आ रही थी? एक प्रॉब्लम आ रही थी डैम्पिंग ऑफ की, जो कि सॉइल बॉर्न प्रॉब्लम है. तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि सॉइल ही हटा दो वहां से. तो ठीक है साहब, सॉइल हटा दिया तो वी आर गोइंग फॉर द planting media, that is organic media, or we can say that is soil-less media. So coco peat is a very common soil-less media which is popular in the nursery. Coco peat is basically the byproduct of coconut. Coco peat ये ब्रिक्स में आता है. ये लगभग 5 किलो की एक ब्रिक आती है. कोको पीट बेसिकली इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट. तो इसके अंदर भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं. तो कोकोपीट जो कॉमर्शियल नर्सरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग स्टरलाइज कोकोपीट. सो दिस कोकोपीट इज prepared by the coconut industry. Then they sterilize it through gamma rays. Then they pack it, and the sterilized cocopeat is being sold to the nursery man. This is 5 kg brick. When you just plug the brick and you put the water over it, this 5 kg will become 25 kg. Then you can fill the portrays by this growing media. Even perlite and vermiculite can also be added if you want to add perlite and vermiculite. 8:1:1 is the ratio. 8 kg should be the cocopeat, 1 kg perlite, and 1 kg vermiculite should be added. Or if you are in the northern India where temperature is cool and you want to grow nursery in the winter season, 7:1:2 vermiculite can be increased, because vermiculite is there to provide the heat to the seeds, germinating seeds. So this way media can be prepared and it can be used. So there is no soil, media is sterilized, so we can assure that this soil borne problem we can minimize. This is one way. This cocopeat, इसको समझना बहुत जरूरी है. कोई सा भी कोकोपीट आप इस्तेमाल कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा. कोकोपीट, as I told, it is produced by coconut industry. Coco peat is very high in salt concentration. Its pH is also high. Its salt concentration is very high. Even chloride, which is harmful chemical, which is harmful element for the nursery seedlings, chloride concentration is about 700-800 ppm in coco peat. So washing of coco peat is very necessary. So coco peat can be washed either by spraying the water continuously. Coco peat is spread over a sieve. Water is spread continuously over it, and drained out water is, that is a leaching process basically. The another method of washing, it can be washed in a tank. So coco peat can be filled in a tank, then the tank should be filled in the water. After 1 day, because the salts are dissolved by the water, then this water should be drained out. Then again you add fresh water, again you drain out it. So coco peat washing, after 3 days you can get a neutral pH coco peat, or about 6.5 to 7.5 pH coco peat you can get it. There is another way, you can purchase washed and sieved coco peat out. तो कोको पीट की भी कीमत जो है वो 7 रुपए पर केजी से लेकर 25 रुपए पर केजी तक जाती है. कोको पीट की कीमत में इतना अंतर क्यों है? 7 रुपए पर केजी वाली कोको पीट आपको लेकर के वॉश भी करनी पड़ेगी, छाननी भी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इनर्ट मैटर भी होंगे, फाइबर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे. इफ इट इज सीव्ड तो उसके अंदर फाइबर्स और वो जाली लगा के उसको निकाल दिया जाता है. देन इफ इट इज वॉश्ड, देन इट इज कॉस्टली, बट दैट इज सुटेबल. अब वॉशिंग के लिए एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है. यहाँ पर बहुत सारे नर्सरी मैन एसोसिएशन के पास, मैंने नर्सरी मैन के पास ऐसा देखा है कि उनके वो कोको पीट की वॉशिंग तो कर रहे हैं, बट स्टिल कोको पीट का साल्ट कंसंट्रेशन कम नहीं हो रहा है.
तो वाटर चेक करना बहुत जरूरी है। अगर वाटर में ऑलरेडी बहुत साल्ट आ रहा है, 1000 ppm salt is there in water, so how can this water reach out the salt from the coco peat? तो वाटर क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है if you want to go for the washing of the coco peat. Even water quality is also important for the nursery. So if your water is not of good quality, you should go for the RO system. Even several nursery men are installing the RO system also for the good quality water. So these things when we use, then we can go for the modern vegetable nursery. Here this is a picture of modern vegetable nursery. I can show you one more picture of modern vegetable nursery with its features. This nursery is under totally controlled condition. It may be naturally ventilated polyhouse or it may be forced ventilated polyhouse, providing the shade net over it. Foggers are also provided over it. This is boom irrigation. So this pipe is known as boomer. Here this boomer, it travels over the rain. One is a wire to provide the power to the boomer to travel to and fro, and the another pipe is to supply the water to the boomer. So this boomer is just to spray the water. Even you can spray the nutrient solution also over the seedlings, and this way this boomer can travel to and fro. Fogger is also there for the temperature control, for the humidity control. Shade net is also provided over it for the light control and for the temperature control. So all these controls are there. Another thing you are observing in this photograph, the nursery or seedling bed is not on the ground. It is above the ground level. While in the intermediate stage, we have seen that though we have cut the connection of our seedling through the soil just by using portrait and putting it over the polythene sheet, but still sometimes what happens, polythene sheet it breaks और कहीं से वो फट जाती है, फिर नीचे से इन्फेक्शन आ जाता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, या नीचे से एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, नीचे से मॉइस्चर इतना हो जाता है कि नीचे से डिजीज आनी शुरू हो जाती है। तो मॉडर्न नर्सरीज में हम देख रहे हैं कि इट इज नॉट ऑन द ग्राउंड, इट इज अबव द ग्राउंड, दैट इज ऑन टेबल टॉप। और इसके नीचे भी हमें पॉलिथीन नहीं बिछानी है, इसके नीचे हमको बिटवीन टू रोज, बिटवीन टू बेड्स वी कैन प्रिपेयर द कंक्रीट फ्लोर, and below the table it is we can put some gravels there, so that when the gravels will be wet, the climate below the table will also be cool for the plants. There is no connection of the plant with the soil. We are using media that is sterilized. Even जब हमने नर्सरी की प्रॉब्लम बताई थी तो मैंने आपको बताया था लीफ माइनर, थ्रिप्स और माइट्स जो कि इंसेक्ट अटैक है. दिस इज अंडर ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, so no insect from outside can travel to the inside. So this way we can minimize the problems of disease and problem of insect. यहाँ पर हम एक अच्छा प्लांट स्टैंड, क्योंकि देखिए इतना नौबत करने की इसलिए आई क्योंकि वेजिटेबल सीड्स, हाइब्रिड सीड्स आर वेरी कॉस्टली. अभी इसके जर्मिनेशन की बात आती है तो इसके एक सेक्शन का फोटो मैंने यहाँ लगाया है. even in the poly house, when we sow the seed, it is put under the tunnel, because 25 degrees centigrade or 30 degrees centigrade temperature is good for the germination. So for the germination, we want to increase the temperature if we are working in the winters. If we are working in the summers, this tunnel is not required. Fogger is required to cool out down the temperature and to maintain it between 25 to 30 degrees centigrade. So temperature control is also there. When temperature control is there, no outer agent is there, definitely we can assure good germination percentage and good seedling stand. क्योंकि मोर्टेलिटी भी हमें जर्मिनेशन परसेंटेज तो एश्योर करना ही है, उसके बाद हमें मोर्टेलिटी को भी कम करना है, खत्म करना है, वो भी एक हमारा टास्क है. तो उसके लिए सारा वातावरण तैयार किया जाता है, दैट इज नोन एज मॉडर्न नर्सरी. अब ये इतना जब सब कुछ करना है तो जाहिर है इतना सब कुछ फार्मर्स नहीं करेंगे. ये बहुत बड़ा कारण है कि फार्मर्स आर रनिंग टुवर्ड्स द कॉमर्शियल नर्सरीज फॉर द परचेज ऑफ सीडलिंग. जबकि पहले फार्मर्स अपने पास कुछ भी नहीं तो मच्छरदानी लगा के उसके नीचे पोल्ट्री में सीडलिंग तैयार कर लेते थे. लेकिन अभी वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वेजिटेबल सीड्स आर कॉस्टली.
I mean hybrid seeds are costly. This fogger, when we install fogger in the modern nursery, fogger may be four-way fogger or one-way fogger. This is LPD, leakage preventing device. It is very necessary to install with the fogger. Otherwise, what will happen? Foggers are hanging over through the roof because there is a pipeline also for water supply. When you put on the fogger, it will fog the water droplets. When you off it, then there is water, already water is present in the pipeline. That water will drop by drop over the seedlings. So the seedlings below the fogger, it will get damaged. So leakage preventing device is very necessary. When you install the leakage preventing device with the fogger, as soon as you off the fogger, immediately the water droplets will stop. There will be no leakage, so no water droplet will fall on the plant and there will be no damage on the plant. You can also use force ventilated greenhouse. If you are using force ventilated greenhouse, then fogger is not required, but shade net is required. This is another view of modern vegetable nursery. Nursery is on the tabletop. There is gravel below it. The pot tray is there for the seedling production. This pot tray is basically, its length is 54 centimeter. Its width is 27 centimeter. So the width of the table is 110 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का 1.10 मीटर का लेंथ विड्थ होता है टेबल का, जिसपे कि दो पोटरे आ जाती हैं। दोनों के बीच में रास्ता होता है, तो हम इधर से जाके काम कर सकते हैं, इधर से जाके काम कर सकते हैं, पौधों को देखभाल कर सकते हैं। और हाइट इसकी, जैसे हमारे घर में किचन होता है, उसकी जो हमारी किचन की स्लैब होती है जिसपे खड़े होकर हम काम कर सकते हैं, ना तो हमें झुकना पड़ेगा और ना ही हमें गर्दन ऊंची करके हाथ ऊपर करना पड़ेगा। तो इसकी हाइट लगभग 32 और 35 फीट रखी जाती है टेबल टॉप की, जिससे कि आराम से लेबर खड़े होकर काम कर सके। तो इस तरह से हाईटेक और वेजिटेबल नर्सरी, मॉडर्न वेजिटेबल नर्सरी को डिजाइन किया जाता है। अभी इसमें भी एक प्रॉब्लम दिख रही है। देखिए ये सारी मॉडर्न वेजिटेबल नर्सरी है, इस फोटो में एक प्रॉब्लम आपको दिख रही है, ये मैं बताता हूँ क्या दिख रही है। देखिए इसमें सीडलिंग जनरेट नहीं हुआ, इसमें सीडलिंग जनरेट हुआ है लेकिन ये सेंटर से नहीं आया, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से है। अदर कैविटी में सीडलिंग पूरा राइट साइड से आया है। इधर भी आप देखिए सीडलिंग सेंटर, इस कैविटी में सीडलिंग सेंटर से आया है, इस कैविटी में सीडलिंग सेंटर से निकला है, इस कैविटी में सीडलिंग थोड़ा सा बैक साइड से निकला है। तो ये सब सेंटर से नहीं निकल रहा है। साफ पता चल रहा है इस पोर्ट्रो को देख करके कि इसमें मैनुअल सोइंग हुआ है। मैनुअल सोइंग होने से क्या होता है, सम टाइम लेबर पुट द सीडलिंग्स डीप, सम टाइम शैलो। शैलो सीडलिंग का जनरेशन पहले हो जाता है, डीप का बाद में होता है। यहाँ पे हमको ग्रोथ में अंतर दिखता है, ये वाला सीडलिंग छोटा रह गया है, पीछे वाला बड़ा हो गया है, ये वाला छोटा रह गया है, तो वो हमें अंतर दिखने लगता है। क्योंकि लेबर ने मैनुअली सीड सोइंग किया है, ईच कैविटी, वन सीड इन ईच कैविटी, बट सोइंग इज मैनुअली, तो उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है कि सभी की लेबर्स हर कैविटी के सेंटर में सीड की सोइंग कर सके। सो दिस इज ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन। इट शुड बी वन मोर फीचर इन द मॉडर्न वेजिटेबल नर्सरी। इसमें मीडिया फिलिंग, इसमें एक तरफ से मीडिया भर देते हैं, इधर से पोर्ट्रे केवल एक आदमी लोड करता है, बेल्ट चलती रहती है, मीडिया फिल हो जाता है, फिर वो बेल्ट आगे आती है, यहाँ पर एक ट्रे में सीड रहता है और इस ट्रे में निडल्स या ड्रम होता है जो कि वैक्यूम ऑपरेटेड होता है। वो एक सीड ओपन करता है, एक सीड सक करता है और सीड उसमें डाल देता है पोर्ट्रे के सेंटर में। यहाँ से जब मीडिया फिल होकर आता है तो सेंटर में होल भी होना चाहिए ना सीड जाने के लिए, तो यहाँ पे एक रोलर होता है, डेंटेड रोलर, कांटेदार रोलर है, डेंटेड रोलर, ये एक होल करता चलेगा एवरी कैविटी के सेंटर में। फिर ये सीड सोइंग मशीन एवरी कैविटी के सेंटर में सीड पुट कर देगी। अगेन द ट्रे विल गो फॉरवर्ड, अगेन देयर इज वन मोर हॉपर, इट विल आल्सो पोर द रिमेनिंग मीडिया ओवर द पोर ट्रे, तो सीड कवर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे एंड से लेबर को वो ट्रे वहां से हटा लेंगे। उसके बाद वो ट्रे आप टनल में ले जा सकते हैं, अगर समर विंटर सीजन है, अगर समर सीजन है तो आप
फॉगर वाले पॉली हाउस में ले जा सकते हैं और वहाँ पे आप जर्मिनेशन एश्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न वेजिटेबल नर्सरी में ऑटोमेटिक काम भी हो सकता है। अपना अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है, ईच एंड एवरी सीड शुड बी जर्मिनेटेड बिकॉज हाइब्रिड सीड कॉस्टली। वन, नेक्स्ट, एक बड़ी प्रॉब्लम जो फार्मर नर्सरी लगाता था उसमें ये आती थी, व्हेन वी गो फॉर द ट्रांसप्लांटिंग, हमको अप्रूव करना पड़ता है नर्सरी में से। तो नर्सरी में से हमने प्लांट सीडलिंग को अप्रूव किया तो फाइब्रस रूट डैमेज हो जाती थी। फिर उसको हम ट्रांसप्लांटिंग करते थे फील्ड में वेजिटेबल सीडलिंग को, तो वहां पर एक ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगता था और लगभग 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए वेजिटेबल सीडलिंग की ग्रोथ रुक जाती थी। उसके बाद फिर ग्रोथ चालू, जब अगेन नई फाइब्रस रूट आती थी तो ग्रोथ चालू होती थी। What is the case in modern vegetable nursery? When you pull the seedling from the pot tray, it will come out with the media and with the root ball. Even the fibrous root will not get damaged. अभी जब इसको इस तरह की सीडलिंग जो आपको इस फोटो में दिख रही है, इसको हम जब फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे, then what will happen? There will be, I cannot say no transplanting shock, but there will be the minimum transplanting shock, and very quickly the regrowth of the seedlings will start in the field. तो वहां पर भी हमारा को जो हमारी ओवरऑल क्रॉप आने वाली उसमें भी हमारा टाइम बचेगा। दिस वे मॉडर्न वेजिटेबल नर्सरी कैन आल्सो बी एस्टेब्लिश्ड along with the fruits and ornamental nursery. Thank you very much. Thank you very much for your nice presentation, sir. So now I request all the participants, those who have any question to our speakers, they are available with us now. So this platform is open for the discussion. Is there any question from the participants? Yes, there's a question for Dr. Pankaj. Yeah. Yes, please. I am setting up a vegetable nursery in my native place where Yeah. I'll be using this media and trays for germination. Yes, yes, yes. Now, the guidance which was given to us is make some hardening when the seeds are germinated and before giving it to the farmer. Yes, sir. Yes, sir. Can you elaborate on that point, sir? Yes, sir. Yes, sir. That point actually is missing in my presentation. Actually, depending upon the vegetables, it takes time to be ready the seedlings. For 30 days, 25 days, 40 days, 45 days, between 25 to 30, between 25 to 45 days are the ranges. Depending upon the vegetable, it is the time to be ready the vegetable seedlings. What is suggested? One, when you want to give it to the farmers, withhold the irrigation. इरिगेशन थोड़ा सा एकदम विथहोल्ड भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पौधे मरेंगे, उसको स्टॉप करना चाहिए। अनदर थिंग, यू रिमूव द शेड नेट। इफ इट इज ओपन वेंटिलेटेड पॉली हाउस, रिमूव द शेड नेट और इसको थोड़ा ज़्यादा लाइट आने दीजिए पौधों के ऊपर, इससे ये हार्डन हो जाएगा। इफ यू आर ग्रोइंग सीडलिंग्स इन फोर्स वेंटिलेटेड पॉली हाउस, so one net house should also be suggested before 5 days to giving it to the farmers. इसको इस पोर्ट्रेस को पॉली हाउस से निकाल के शेड हाउस में रखना चाहिए, बिकॉज द लक्स इज मोर, लाइट लक्स इज मोर इन शेड हाउस। तो वहां पर अच्छा, बाकी जो केयर है वाटरिंग और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वो करना चाहिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टास्कटी में मैंने टच नहीं किया क्योंकि वो महेश जी ने टच कर दिया था। इस तरह से इसको लगभग 1 वीक और 5 डेज हार्डनिंग इसकी करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है सर, फार्मर्स को देने से पहले इसकी हार्डनिंग करनी चाहिए। Thank you, sir. It's okay. Mr. Mahesh Dambore, sir, there is a question, one question for you. Mr. Mahesh, can you hear me? Yes, I can. Yeah. What the CRO fertilizer used in hydroponics? Can you focus on this? Yes, actually, CRF fertilizers are hydroponics by, you mean coco peat or nothing? What kind of media? Shivam ji, do you want to ask anything? आपको कुछ पूछना चाहेंगे शिवम शर्मा साहब? Yes. Good afternoon, sir. Everyone. Yes, clay balls I am using in hydroponic.
Shivanji, you are not audible properly. Hello. So I will take another question to Tiwari madam. Dr. Tiwari madam, are you able to hear me? Yes, sir. Tiwari madam. Is Yes, it sir. Yes, mutations can contribute the hybrid seed production? If yes, and then yes, how? This is a yes. propagation from Dr. Popat Sabat. Sir, mutations are basically used to create variation. Variations in the genes which are already once would have been present or will be present. So those genes which are already present somewhere not in use right now or would have been got extinct, those genes can again be recreated using mutations. And those genes, especially in case of resistance or for example in flower or vegetable color changes, if you are because of the mutation any gene gets created which is changing the color, then that can be used to transfer that gene into our desirable plant using hybridization method. So yes, for hybrid productions, we can use mutations for creating the variability. Thank you very much, madam. I think Mr. Mahesh sir has given the answer in already on the chart. So thank you very much, Mahesh sir. Is there a question from the participant? Is there a more question? Yes, question to Mr. Mahesh. Yes, sir. Regarding this growing of vegetable seeds in trays, how will you recommend your this what do you call Controlled granulated release fertilizers. yes, CFR. Yeah. Actually, I would not recommend controlled release fertilizers in vegetable seedlings, primarily because of economics, because the cost of the seedling is very small. But what you could use is turbo root for rooting, and Nutri-Complex Gold 6270 as a foliar spray. It works wonderfully. A lot of people, nurseries in the Pune area are using these two products. And you could definitely go ahead with those products. Controlled release fertilizers probably wouldn't be recommended because of the economics. Since the cost of the seedlings is very small, I wouldn't recommend that. Yes, sir. Thank you. I think Shekhar sir, you have got a very proper answer from Mr. Mahesh. Yes, So thank yes. you very much. Is there any more question? किसी का और सवाल है? हमारे आज के जो हमारे 4 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वेजिटेबल सीड्स एंड नर्सरी प्रोपोगेशन, उसके बारे में किसी का सवाल हो तो पूछने के लिए पूछ सकते हैं आप. I think all the questions are over now. Now we are here to wrap up our session. So I am very thankful to our speakers, Mr. Mahesh Damdore, Dr. Avanesh Kumar, Dr. Ranjana Tiwari madam, and Dr. Pankaj Srivastava sir for their giving valuable time to us and sharing a valuable knowledge to with all the participants. So Indian Nurserymen Association is very thankful to you all the experts. उसी के साथ साथ जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए जिनका सहयोग से ये चल रहा है, उन सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन नर्सरी एसोसिएशन की ओर से. उसके साथ साथ जो आज के हमारे स्पॉन्सर थे न्यूट्रीस्टार इंटरनेशनल, so thanks to Nutristar International for sponsoring this webinar. Special thanks to online outreach partner Nursery Lab. उसके साथ साथ इंडियन नर्सरी के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वाईपी सिंह साहब, सेक्रेटरी मुकुल त्यागी साहब, उन सभी का और इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की पूरी टीम का हम शुक्रगुजार है, जिनके मार्गदर्शन से ये वेबिनार्स हो रहे हैं और सभी को इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. तो इन सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ. उसी के साथ साथ जो हमारे जी साहब है जो हमारे साथ लगातार सब कोऑर्डिनेशन में लगे रहते हैं, उनके बदौलत आप सभी अच्छे स्पीकर्स हमारे तक पहुंचते हैं, पार्टिसिपेंट्स को अच्छा नॉलेज मिलता है. तो थैंक्स टू दीपक चटर्जी साहब, मंजीत सिंह जी, विशाल जी और अंकिता पांडे मैडम जो ये सब वेबिनार आप हम तक पहुंच के लेती है, हम तो सब लोगों को जोड़ती है. तो उन सभी मंजीत सिंह विशाल और अलंकृता पांडे मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया और thanks to all once again and see you in the next webinar. Till then, bye bye. Thank you very much. Thank you.